शंकरनाथ। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, कीर्तन आरंभ। ओके माता जी। ठीक है। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशदारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जगन्नाथ, गुरु प्रणाम। स्टार्ट पिक।
ओवैज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाजलाजलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदाधीश्वरं वन्दे पथगमनं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सखगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सखगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धार भवान् श्रीमद्भागवत योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुच्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सर्वथा सफलत्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुधरे कङ्गणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं हे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणे कराग्र विगलत् कल्पप्रसूनालुप्तं वस्वत्प्रस्वत्पूर्णनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्त स्रस्त निबद्ध निविलसते गोपी सहस्रवृतम् अस्तन्यस्तनतापवर्गम् अखिलोदारं किशोराकृतिः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रतासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणं श्लोकार्थं श्लोकपाठं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठे शृणुयात् यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति नरा भक्त्या मम प्रीते च सुकृत वस्त्रालङ्करणैः पुष्पैर्धूपधूपहारकैः बहिकृतो ह्यहं तस्य सस्या सत्प्रतिदिता शुकरूपप्रबोधज्ञा सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन निदज्ञानं विनाशय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चाप्तेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजोवारिमृतामिता विनिमयोऽत्र त्रिसर्गोऽंशेन सदा निरस्तकोऽहं सत्यं परं धीमहि कर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो नमस्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरुफलं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सूतो उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपं अतिथितिष्ठतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नश्चिके शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनां हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विघ्नोऽपि सुहृत्सताम्। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्षेण कदासु यः न उत्पादयेत् यतिरतिं समयेव हि केवलम्। Hare Krishna. We welcome all the devotees for the wonderful session of Srimad Bhagavatam. And before we start, let me ask you, please excuse me, we got delayed due to other programs also.
So now we are in the 10th canto, first chapter, shloka number 45. We have to start. Mukam karoti vachalam bhangam langede girim yat kripa tamaham vande Shri Gurum Dienatarinam Paramanandamadavam Shri Chaitanya Ishwaram Namam Vishnupadaya Krishna Pretaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Nitinamini Namaha Charapadaya Nitaikapa Pradayane Gaurakata Dhamadhaya Nagara Gramatarine Hare Krishna. So yesterday we were seeing the Srimad Bhagavatam 10th canto, first chapter. The chapter title is the appearance of Lord Sri Krishna. So as we see that, we are talking about Kansa with great love. Took her sister and brother-in-law in the chariot, sending them back home. But on the way, he heard the Ashariri, which said, "O rascal, the 8th child of your sister will be killing you." So immediately he took out his sword and instantly he wanted to kill her sister. But at that time, Vasudeva, the devotee of the Lord, was all the cool. So he didn't get agitated, he didn't quarrel or anything. With very soft words, he started telling Kansa about the reality. And he started explaining, he was explaining practically what is called as the Sankhya philosophy, which is explained in the Srimad Bhagavad Gita by Krishna to Arjuna in the 2nd chapter. So what is body? What is soul? And in detail, he was explaining each and every aspect of it. So in this connection, we are looking into the 10.144. Tasmana kasyachit droham acharayet sa tata vidaha atmanaha kshemam anvichan dhur vai parato bhayam. Synonyms. Tasma, therefore, not kasyachit of anyone, droham, envy, acharayet, one should act, saha, person, kansa, tata vidaha, who has been advised in such a way by Vasudeva, atmanaha, his own, kshemam, welfare, anvichan, if he desires, drogduhu, one of the envious of others. Why indeed? Parataha, from others. Bhayam, there is cause of fear. Translation. They haven't read it out. Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Therefore, since envious, impious activities cause a body in which one suffers in the next life, why should one act impiously? Considering one's welfare, one should not envy anyone, for an envious person must always fear harm from his enemies, either in this life or in the next. Hare Krishna. Okay, so moving on to the purport. So in the purport, it's a long purport. Let's continue that. Siddharth. Yeah. Louder. Instead of being inimical towards other living entities, one should act piously by engaging in the service of the Supreme Lord, thus avoiding a fearful situation both in his life and in the next. In this regard, the following moral instruction by the great politician Chanakya Pandita is very meaningful. Jaja Durjana Samsargam Bhaja Sadhu Sangam Samaghamam Kuru Punyam Aho Ratram Smaranityam Anityatam. One should give up the company of devils, demons, and non-devotees, and should always associate with devotees and saintly persons. One should always act piously, thinking that this life is temporary and not be attached to the temporary happiness and distress. The Krishna consciousness movement is teaching all of human society this principle
of becoming Krishna conscious and thus solving the problems of life forever. So as we go to the translation, let us try to understand first, then we'll go to the purport. Translation. Okay. Therefore, since envious, impious activities cause a body in which one suffers in the next life. So what are the two things? One is envy, another is impious activity. So what is impious activity? Activities which are not recommended in the Shastras are impious activities. So activities which are recommended in the Shastras called as pious activity. As we do pious activity, what do you accumulate? Punya, right? As you do impious activities, Papa. So Punya takes you where? Heavenly planets, right? Upper planetary system or heavenly. So Papa takes you to the downwards. So the devotee always crosses over Punya and Papa, never looks for any of the results, right? So that is, he is not interested in any more of the cycle of birth and death, right? Then that's why it says one suffer in the next life. So they will be necessarily taking another body for sure after leaving this body. Then again, considering one's welfare, one should not envy anyone. So one has to take care of welfare. That means one should not do anything impious. They should always do pious activity. For an envious person must always fear harm from his enemies. Because what happens when he do some impious activity, unnaturally what happens? If you do Papa activity, you'll be expecting all the harm from your enemies. Because they will not leave you, they will be trying to retaliate or take revenge. So this is what it says, either in this life or in the next life. So in this life, he can escape from his enemy. But there is another enemy which is waiting in your next janma. What is that? Karma phala. Whatever the results of your acts will be waiting to punish you. So the punishment is going to be that for sure. But only thing, it may be from your enemy on whom you have done some harm, or it can be in your next janma by way of karma. Okay, so moving on to the purport. Instead of being inimical towards other living entity, one should always piously act by engaging in the services of the Supreme Lord. So यहाँ एक व्यक्ति क्या करना चाहिए और दूसरों को कभी भी द्वेष नहीं करना है. द्वेष करेंगे तो क्या हो जाता है? हमको पाप लगता है. So automatically हमको आगे उसका कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा, दुख और कष्ट उठाना पड़ेगा. So it is always ideal to be equal to all, right? Na dveshti, na kankshati, right? That means you have to treat everybody equally. How is it possible? हर एक को तो समान देखना चाहिए. हम लोग अभी क्या देखते हैं? Oh, this is Devan, this is Siddharth, that's Vanamali, this is Subandhu. क्योंकि हम लोग जो आउटर कवर है उसको देख के बताते हैं. This is wrong. हर एक अंदर भगवान विराजमान है, हर एक अंदर एक आत्मा भी है. आत्मा तो भगवान का अंश है. So one should understand, everybody should be treated, whether they are in the body of a man or in the woman. So one should look at only the Atma. So if you are able to treat everybody equally, and if you are friendly with all, automatically what happens? You will not have any problems, as karma cycle will not come to you. So that's what it says, following moral instruction by the great Chanakya Pandita. So when we are in schools, we get it, no, in our history, no, Chanakya Pandita, right? So the Chanakya Pandita is explaining it. Tyaja Durjana Samsargam. Tyaja means what? Tyag karo. Durjana means bad people. And then what does it say? Bhaja sadhu sama dhamam. Bhaja means what? Hare Krishna, Hare Krishna. So bhajan, right? So what do you say? Sadhu Sangha, right? Go to the Sadhu Sangha and do the bhajana. Then what does it say? Kuru punyam ahoratram smaranityam anityatham. One should give up the company of evil devils, demons, and non-devotees
And one should always associate with devotees and saintly persons. One should always act piously, thinking that his life is temporary. Are we thinking our life is temporary? No. Right? We think we are going to live forever. Right? We plan for 10 years. Okay, I'll be in Dubai. I'll save this much. I'll go back to India. Right? So there are lots of plans going on. But one thing is definite. What is that? So as we see that further, it says, thinking that life is temporary and not attached to the temporary happiness and distress. Sukha dukkhe same kritva. One should treat the joy and sadness equally. So that means automatically you will not be suffering. If you joyfully do things, at that time, momentarily, you will be happy. Right? The next thing, what will come on now? Sadness. Then you will cry. For instance, now summer is going to start. Everybody will say, oh, Prabhu, it's too hot. Mataji, without AC, we cannot live. They say that, no? Then 4 months gone. Then winter comes. Oh, it's very chill. We need shawl. We have seen it. How many years we have lived? 30, 40, how many years? We have seen it. In a year, this cycle is always happening, right? The summer comes and goes. The winter comes and goes, right? Similarly, happiness comes, it stays ever. Anybody can raise your hand. I am always happy. Why? Always happy. Oh, he's a devotee here. Then he's a devotee. Yes, always happy. Acha, Purnanand bhi, Hare Krishna. So, भक्तों के बीच में रहेगा तो always happy. ये क्लास तो ऐड करना पड़ता ना तुमको. भक्त संग नहीं है तो दुखित इंतजार कर रहे तुमको पकड़. सबको प्रसाद खिला के बांट के मेरे को बहुत खुशी होती है. So I'm always happy. और मैं संडे के लिए इसलिए मुंबई मत जाओ, ठीक है? इधर ही रहो. मैं दुबई छोड़ने वाला ही नहीं हूँ इसके लिए. नहीं, बीच में जाता रहो, वो भी नहीं करो. Okay. So this is what explain. Go to the purport, my dear. Hey, what happened? Finish. Alert, my dear. Okay. Wait 1 minute. So as we see that, it says, this principle becomes Krishna consciousness. This is very simple. So what is Krishna consciousness? Is very simple. Always remember Krishna. Okay. Whatever suffering comes, tolerate it. When joy comes, keep cool. Right. So this is what we are learning from the Bhagavata, because Krishna says to Arjuna, we try to follow it. So this is Krishna consciousness. Automatically, such a person need not worry about the next janma, next body. So how many type of bodies we have? 84 lakhs of bodies. How many of you are hearing for the first time this statement? There are 84 lakhs of bodies for us. How many are hearing for the first time? Oh, everywhere. Good, very nice. So before that, you have not heard about it. That means, when did you get this human form? After crossing all that 84 lakhs of species. Right from plants, animals. Animals, I am telling one, there are lakhs and lakhs of animals' body. Right from reptile, so many things, long things. Then coming back to that, lastly, the human form. So, no. So these are the living entities means, try to understand plants, animals, human beings, only this. So this is what the cycle we have. So there are 84 lakhs of species. Okay. So here, a devotee does not bother about the next janma because he is confirmed going back to Godhead. Because the moment you go to the Goloka Vrindavan or Vaikuntha, you need not come to the earth to take another body. How many of you want to go back to Goloka Vrindavan? How many of you want to come back again? So the understanding is very clear. It says,
Tyaktva deham punarjanma. Tyaktva means sacrificing, tyag. Punarjanma means there is no next birth at all. So that's why if you look at the Adi Shankara also, he says very clear. The association what we have, that is the quality we have. Even in the, what is that called? Lots of shlokas in the Bhagavatam, in the even Vaishnava songs also, it very clearly says association matters a lot. Right? So moving on to the next shloka, boys. Yesha Tavanuja Bhala Kripana Putri Kopama Antum Narhasi Kalyani. Oh, what's the word? Kalyani. This is the oldest name in our tradition. How many of you keeping this Kalyani and all? Yesterday I heard the name Pinky. I asked her what is the meaning of Pinky. She could not give. She gave some reply. It was not satisfactory. There is no reference. See the word Kalyani. Oh, fabulous. Imam Tom Dina Vatsalaha. Who is that Dina Vatsalaha? The Supreme Lord. Okay. So I request Hindi. Balakrishna, Shabdarth पढ़ लो तुरंत. हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्णा. शब्दार्थ बाय शब्द जय श्लोकपाद. ऐशाम या तब तुम्हारी अनुजा छोटी बहन बाला अबोध स्त्री कृपया तुम पर आश्रित पुत्रिका उपमा तुम्हारी ही पुत्र के समान. हम तुम उसे मारना न नहीं अर्हसी तुम्हें चाहिए कल्याणी तुम्हारे स्नेहाधीन इमाम. इसको तुम दीन वत्सल गरीब तथा अबोध पर अत्यंत दयालु. अनुवाद भाई शाहबाद जय इस्लामाबाद. तुम्हारी छोटी बहन बेचारी देवकी तुम्हारी पुत्री के समान है और क्या हुआ? वह लाड प्यार से पाल का हरे कृष्णा. वध नहीं करना चाहिए. निश्चय I think there is a Wi-Fi problem. Hare Krishna, Prabhu. Thank you. So, अनुवाद में क्या बता रहे हैं? As your younger sister, this poor girl Devaki is like your own daughter. हरे कृष्णा. सब लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनो. यहाँ शास्त्र में कैसे बताता है रिश्ता के बारे में. आज हम लोग देखा था रामायण में, right? Lakshmana considered Lord Rama and Srimati Sita as his father and mother because father passed away. So this is our Shastra explained. In the Bhagavatam, it is explained here. Who is telling? Vasudeva is instructing Kansa, your younger sister, Devaki. She is equal to your daughter. That's why the elder brothers are supposed to take care of the younger sisters. This is the Shastra explained repeatedly. Okay. So then he says, and deserves to be affectionately maintained. प्यार से उनको पालन पोषण करना जरूरी है. आगे क्या बताता है? You are merciful. I forgot the boy here, no? Siddharth, you have a sister, right? Younger, right? Yes. So she has to be considered your own daughter. And how you have to be very affectionate. Right? These are the lessons. Okay. Then it says, therefore, you should not kill her. Indeed, she deserves your affection. This is what the Sanatana Dharma. What is it called as? Sanatana Dharma. बच्चों आवाज ज्यादा कर रहे हैं, कुछ कर लो. हरे कृष्ण. श्री शुको उवाच एवं स सामभिर वेदैः बोध्यमानोऽपि दारुणः न न्यवर्तत कौरव्य पुरुषाधान अनुवृतः. Okay, Simran, can you read that synonyms? Is it visible here on the TV? If you can, do it. Okay, do it. Okay, do it.
by attempts to pacify his concern. He gave by moral instructions that one should not be cruel to anyone else. Bodhyamanaha api, even being pacified. Darunaha, he who was the most fiercely cruel. Never better, could not be stopped from the grievous act. Kauravya, O Maharaj Parikshit, Purusha Adan, the Rakshasas, man-eaters, Anuvrataha, following in their footsteps. Translation. Hare Krishna. Vigneshwari, can you read it? First 15. Anandeshni. Neither satisfied nor terrified by the good instructions given by Vasudeva. He did not care about the results of sinful activity, either in this life or in the next. So, what does it say? Sukadeva Goswami continued. O best among the Kuru dynasty. Who is that best among the Kuru dynasty? Huh? Louder. Parishit Maharaj. So, the story goes on. Sukadeva Goswami is narrating to Parikshit Maharaj, but in between we are taking the conversation between Vasudeva and Kamsa. Okay. So, who was best among the Kuru dynasty? Kamsa was fiercely cruel and was actually a follower of the Rakshasas because he was having the quality of the Asuras. Asurik स्वभाव उनका अंदर था, हमारा पास भी है, right? हर एक व्यक्ति के अंदर आसुरिक स्वभाव तो होता है, right? वो आसुरिक स्वभाव कभी उसका सिर उठता है when the आसुरिक स्वभाव raises its head. Situation is not favorable. Fear or maybe Fearful. Can you make it very simple? Bad association. Very simple. Bad association. Very simple, right? So the bad qualities comes out in the bad association, right? You always remain in the good associate, only the good will remain. The bad will go off. बहुत आसान है. जैसे सत्संग में रहेगा तो जितना भी आपका अंदर सत्व गुण है वो बाहर निकलेगा. आसुरिक स्वभाव जितना भी वो चले जाए. So this is what the understanding here. So we should understand what is more important is remain in association of the Lord. प्रभु लोग थोड़ा पास बैठ जाइए, सबको जगह चाहिए, please adjust yourself, come closer. क्योंकि अभी बताता हूँ सभी भक्तों को, सत्संग बोलेगा तो भक्त का भक्त जोड़ के बैठना चाहिए. One should not think, oh, it is very close. Okay, there is no corona, there is no COVID now. Okay, only Bhāgavatam is here. Do not worry about anything. Come closer, come closer. Hey, do you need this table? Or come closer, all of you. Prabhu, आगे आ जाओ. Adjust, okay? Hare Krishna. So as we see that, listen carefully, Kamsa was fiercely cruel and was actually a follower of the Rakshasas. Therefore, he could be neither pacified nor terrified by good instructions given by Vasudeva. So, इतना वसुदेव ने उनको शिक्षा दिया है, फिर भी उसमें फायदा नहीं है. क्या कारण है? उसको मूर्खता स्वभाव. Because he had a bad association, that's always there. Okay. Then moving on to that, he did not care about the results of sinful activities. क्योंकि हमको जब ये बुद्धि बिगड़ता है, तभी हमको मालूम नहीं होता आगे क्या होने वाला है. कुछ भी होने दो, ऐसे ही सोचेगा, right? I'll tell you, the mind is your enemy as well as a friend. What's the Bhagavad Gita says? The mind is your friend and enemy. What is that? Huh? Bandhuratmas. Very good. Pura shlok batao. Very good. He said the second portion, but he said the first portion. He said the first portion. The Uddharedatman Atmanam also a perfect shloka. Say that fully. Na Atmana avashati Atmaiva Atmabandhuhu Atmaiva Ripuratmanaha. That means what does it say? The mind is your friend, at the same time mind is your enemy. ये जो वस्तु है दिखता नहीं है, right? It is called as what? Subtle body.
सूक्ष्म शरीर अंदर है मगर दिखता नहीं है, मगर वो क्या करेगा, जैसे हम उसको हैंडल कर रहे हैं वैसे हमको मिलेगा. So yeah, so this is what we have to understand here. So automatically a person, when he stays in an association of good devotees, his all good qualities come out, as I told you. Then it becomes your friend. Similarly, the same guy, when he mingles with the bad association, automatically what happens? The bad qualities comes and he is destroyed. So we have to be very careful on this. It's very simple. Okay. Then moving on to that, he was unmindful of the sinful activities. अभी जो भी दारू पीता है उसको थोड़ा सा जाके उपदेश देने के लिए कोशिश करो, क्या हो जाएगा? Hell with it. क्या बोलेगा? Hell with it. वो हिल जाने वाला, वो अलग बात है. वो क्या बोलेगा? Hell with it. ऐसे बोलता नहीं. So this is because he is the influence of intoxication. क्योंकि दारू अंदर जाएगा तो एकदम बिगड़ जाता है. So this is what the situation with the Kansa. He is completely under the influence of the asuric स्वभाव. क्योंकि भगवत गीता में भगवान बताता है दैव असुर संप विपाद योग, मतलब कौन सा योग में हम रहते हैं वो सीख, राइट. सो मूविंग ऑन टू दैट, ही इज नॉट बॉदर्ड इन दिस लाइफ टाइम ऑल्सो, सफरिंग्स नो प्रॉब्लम, इन द नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो नो प्रॉब्लम. दिस इज व्हाट ही. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट श्लोका. या यस. For good association, we know that there's the sampradaya, right? That's how we got the good association. Perfect. So for bad association, you said that asura is the qualities, they come from a bad association. So in that bad association, will have bad association, right? So constantly goes back and back and back. So what is the source of it? Good question. This is the really interesting question. सबको जानता होगा इनका सवाल, मैं आपको एक बार बताता हूँ. अभी सत्संग के लिए एक संप्रदाय होता है, वो संप्रदाय प्रामाणिक होता है, राइट. हम उसमें जोड़ेगा तो भगवत विषय में आगे बढ़ सकता है. हरे कृष्णा, थोड़ा आगे आइए प्लीज, और भक्त लोग भी खड़ा है बहुत. हरे कृष्णा. इधर भी सोफा में कोई भक्त भी बैठ सकते हैं ना. Don't worry, nobody will say you are older, huh? Sit in the sofa. Youngsters also can sit. Okay, so coming back to the question, what does he say now? The next question, what does he say? Is there any lineage in the bad association? Right? Where does it start from? Or what is the origin of bad association? Right, I'll tell you. Hare Krishna. Hari Bol. Hari Bol. Please keep it in silence. Okay. So the question is, Hare Krishna. प्रभु सब लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए. हरे कृष्णा. Siddharth, the fan is required, table fan. Take it out. Take it out. Take it out. You will get space, no? Try to create more space, please. Okay. So the question is, where is the starting point of the bad elements or bad association? Hare Krishna. That's also, you can remove it. Good idea. Siddharth, you have to remove the box also. अंदर भेजो. नहीं, कमरे के अंदर भेजो ना, उसको ऊपर नहीं हो सकता है. It will not go there. Please pass it on, somebody please pass it on. We'll get more space. Prabhu, come closer. Hare Krishna. So listen carefully. We are coming back to the question. Lots of distraction. The question I will repeat again. For good things, there is an association, there is a sampradaya, and there is a pramanik sampradaya. And the bad elements, right? The bad things which is there any lineage? Is there any chain of discipline? Or is there anyone who started this? Where does it come from? So that's the question of this devotee boy. It's as simple as that. When the creation starts, right? There is which is called as Mahat Tattva. It's like a solid one. This solid one, all elements are there. All elements. The nature, the prakriti, what is called as
Prakriti. The Prakriti means always is consist of 3 gunas. क्योंकि जैसी प्रकृति बोलेगा तो उसके अंदर 3 गुण तो होता है. कौन सा 3 गुण है? सत्व गुण, उसके बाद रजोगुण और तमोगुण. राइट? ये तीनों गुण में शास्त्र क्या कहता है? जो व्यक्ति, जो मनुष्य सत्व गुण में रहेगा तो he always remain in good association. इसलिए भगवान का भक्त को क्या बोलता है? सात्वताम. क्या बोलता है? सात्वताम बोल के तो डिवोटीज. राइट? आगे देखिएगा तो यहाँ दूसरा 3 गुण में क्या बताया? रजोगुणा, तमोगुणा. रजोगुणा बोलेगा तो अंग्रेजी में क्या बोलता है? पैशन. आजकल बोलते ना, सचिन को पूछो क्रिकेट में आपको इतना पसंद क्या हो गया? पैशन, मतलब मैडनेस. बस इतना ही है. पैशन का ओरिजिनल ट्रांसलेशन बोलेगा तो मैडनेस. सो इसमें क्या होता है? हमेशा आसक्ति, डिजायर, and sometimes you go to any extent to do that. Right? Where does it said in the Bhagavad Gita? Dhyayato vishayan kumsaha. अभी हम लोग मीना बाजार में जाता है, पत्नी, बेटी और सबके साथ. बेटा को भी ऐड करो ना, ये तो माता जी लोग. So as we go through that, there is one Malabar, there is one Alukas, then there is another one. Right? So each and everyone is displaying wonderful, wonderful things, right? बेटी बोलेगा, माँ ये डिजाइन अच्छा लगता है. Right? So like that, each and everything in the material world attracts. I am talking of this when we talk about the physical thing, a youth and a youth girl. So this type of attraction is always there. So at the time of creation, this is given, and the senses are also given. So the senses are always moving towards that. क्योंकि ये भौतिक प्रकृति का स्वभाव क्या है? इंद्रिय तो हमेशा कुछ भोग करने के इच्छुक रहते हैं, क्योंकि अपना असली स्थिति को भूल गया. असली स्थिति क्या है? जीव तो हमेशा भगवान का सेवक है. उसमें से वो प्राप्त कर सकते क्या है? परमानंद. ये भौतिक जगत में परमानंद का बात ही नहीं उठता है, unless you always chant the holy names in the association of devotees, or unless you read the Bhāgavatam in the association of devotees. So the Rajogun takes you to enjoy things. When you try to enjoy things, you try to do something away from the Shastras. Right? That's the root cause for doing wrong things. Right? Moving on to the next guna, Tamoguna. Tamoguna also leads you to do so many things which are not acceptable in the Shastras. Because you are under the mode of what? Ignorance. अज्ञान में रहते. Right? हम लोग किसी से बात करते हैं, राइट, तुरंत हमको उसको एक थप्पड़ देता है. क्या कारण है? अंदर से हमको स्वभाव बदली होता है. राइट? कुछ क्रोध आता है, कुछ भी उन्होंने जो बताया आपको ऊपर बुरा बोलेगा तो गुस्सा आता है. राइट? सो द इंस्टिंक्ट इज टू गिव. सो ऑटोमेटिकली when the ajnana comes, I'll tell you, listen carefully, the tamoguna leads you 2 things. One, you forget you are the soul, you are the Atma, and you always relate yourself as the body. The body remains always or not? Hare Krishna. सभी भक्त लोग, नया भक्त लोग बहुत दिखता है. Please always answer. I'll ask in English if it is convenient for you, or I'll ask in Hindi. Whether the body remains always or not? Huh? Hare Krishna. Louder, louder answer. No, you cannot answer. No. Hare Krishna. No, very good. Atma remains ever, right? So here, when we understand we are not the body, then we remain in the Sattva Guna. Clear? When we don't understand we are Atma, and when we think we are the body, we remain in the ignorant level. Clear? So when we are in ignorant level, when we are in the passion mode to enjoy things, we do always all the bad things because these things are not permitted in the Shastra. Clear? So bad thing starts from what you desire. So you can have desires
Two type of desires. Again, one is material desire, one is spiritual desire. I'll tell you one good example. So the Siddhartha and Devan, both are walking on the road, right? Suddenly, one of the boys is telling, "Chalo, let's go for a movie." Right? Which fellow talks to whom other is a different question. The thing is, the moment the attraction for the movie takes place, automatically what happens? Their tendency to know things, what is real, what is unreal, lost. The movie is real or unreal? Tell me. Right? But why we talk about the days, night, to all our friends, oh, I went to the first show, first movie, all these things. Who say that? Many. Hare Krishna. So why I'm telling, this is called ignorance. So what is ignorance? One who cannot identify the reality from the false. Clear? So when you remain in the sattva, you can identify this is real, this is unreal. But for that, you need knowledge. How to gain the knowledge? You gain the association. Clear? So the origin starts from the creation itself. The Lord has given the options, good and bad. The choice is yours. He never compels. Can you imagine such the Supreme Lord? That's why the word comes here. What is the word? I saw that. What is that? Dina Vatsala or kuch. Hey, have changed the sloka or what? Which one? 44 we saw that, right? So that means the Lord is the most kind person. He allows you to do things. But only thing, he has given you the knowledge. Do's and don'ts. When the list comes, always, generally our tendency is, don'ts we will check first. Do's we will not check first. Because, oh, I cannot do this. Because it says, wake up at 4. What do we say? Oh, that's impossible. वो भी दुबई में बिल्कुल नहीं होता है. 4 बजे उठना बिल्कुल नहीं होता है. पहला समय में कुछ होता था. अभी ऐसे ही हमारे साथ एक बच्ची आ गई ना सबको पास. कौन सा बच्ची है वो? इसके बिना सो नहीं सकते कोई को. So automatically, I'll tell you, do not mistake me, how we disturb our mind, how we disturb our health. There is no need of a doctor. There is no doctor here, no? Nobody. See, he is from medical side, no problem. Any doctor? So, any doctor is here? Okay. That's a doctorate. Okay. So try to understand here why I'm telling. See, the health is in our hand, not with anyone else. So as we see that good and bad is in the creation itself, and it is for the jiva to identify what is real, what is unreal. देखिए हमको जैसे मालूम हो गया ये सच है ये झूठा है. So ऐसे मालूम हो गया तो we will be very cautious. So this is the reason. Clear? Hare Krishna. Yeah, tell me. ഇപ്പം പാമ്പിന് വിഷം കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ തന്നെ, തികലിന് വിഷം കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ തന്നെ. സത്യഗുണം മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. എന്തിനാ ഈ 3 ഗുണം നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? എല്ലാവരും സത്യഗുണം. I'll tell you another one question. It is in Malayalam. I'll translate in English. This Prabhu says, why there is a snake and why there is a woman? Women, you know that poison. Okay, venom. Sorry, I said the other way. Venom. Okay, then he talks about the Scorpio. Why there is a venom? So, if those 2 things are not there, we can joyfully live in an old house also. Because in olden days, in the house from the rooftop, the snake will fall down. Sometimes Scorpio will also fall down. I don't know how many have lived in the olden houses. Right? The tiled houses, scorpion will be there. Okay. So, this is the question. I'll tell you. See, the cow is there. It gives milk. What do we say? It's a good animal or not? Right? It gives everything, whatever. It gives milk. From that we get so many things. Okay. So how do you say good? Not good. There is some bad. बुरा नहीं है तो अच्छा दिखेगा क्या? हाँ? सृष्टि में अगर बुरा नहीं है तो अच्छा दिखेगा क्या? किसी को हाथ उठाओ, दिखा सकते नहीं. बुरा होगा तो ही अच्छा दिखता है, अच्छा होगा तो ही बुरा दिखता है.
राइट? ये दोनों चाहिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये भौतिक जगत को द्वंद्व, द्वंद्व मतलब डुअलिटी, ये दुनिया भर के ये दोनों है, बुरा भी है अच्छा भी है। आपको दिमाग बराबर यूज करना है, हमको जो चाहिए। क्लियर? स्पष्ट हो गया? ഒരേ ഒരു മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു ചോയ്സ് ഗുഡ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും ഗുഡ് ചോയ്സ് No, that's what I said. No, how will you identify? आपको कैसे मालूम होगा ये अच्छा है करके? कैसे मालूम होगा बताओ? बुरा होगा तो ही आपको दिखता है एक अच्छा है। हाँ, Why should he bring bad to the world at all? Huh? He should only keep good things. नहीं, Creating don't need for the other नहीं, gunas. नहीं, Only नहीं। subject gunas. नो, फिर चॉइस कैसे होगा भाई? आप तो अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, उनको चाहिए बुरा, राइट? उसको क्या करेगा बताओ? नहीं, आपको अच्छा चाहिए, बाकी को चाहिए ना। हाँ, सॉरी, no, that's you try to understand. See, it's in English very simple. There is an opposite word. You say that, right? Right? So when you say good, how do you say good? Tell me first of all. I ask the question. How do you say good? Huh? Right? If you're not there means no. You compare. You try to understand. समझ में आता है नहीं आता है? हाँ? Compare it. क्योंकि भगवान हमसे बुद्धिमान है, ये याद रखना चाहिए। कम से कम इतना तो उनको बुद्धि है, तो सृजन किया है वो, उसको हम जाके इतना सलाह देगा तो मालूम पड़ेगा हमारा हाल क्या है। In fire you can burn a light also. You can burn a house also. वही कह रहा हूँ प्रभु, वो सृष्टि वाला इतना बुद्धू नहीं हमारा जैसे, ये याद रखना चाहिए। बस इतना ही सीधा कह रहा हूँ। वो तो एकदम चतुर है, भगवान को क्या बोलता है? चतुर बोलता है, द मोस्ट इंटेलिजेंट। ही possesses 6 qualities in full, राइट? अभी देखिए, हम लोग तो बहुत बुद्धिमान है, इतना रोड बनाया, ये बनाया, हाँ? इतना फ्लाइट्स जाता है, वो जाता है, इतना एक्सीडेंट होता है, क्यों? हम लोग तो बहुत बुद्धिमान है ना, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, राइट? It happens because our system is failure, but the Lord's system never fails. That we have to understand. भगवान जो सृष्टि क्या है, वो सृजन में हमको कुछ मिस्टेक देख नहीं सकता। हम लोग इतना आनंद से रहने के लिए, बुक करने के लिए सब कुछ दिया है, फिर भी हमारा दिमाग क्या सोचता है? और एंजॉय करो, और एंजॉय करो, नया नया कुछ बनाता है, राइट? So that means our desire is limitless. Greedy we are, in simple terms. Clear? हो गया? हरे कृष्ण। Okay, अब श्लोक नंबर 47. हाँ? हरे कृष्णा, be in the class. हरे कृष्णा। निर्बंधम तस्यदम ज्ञात्वा विचिन्त्यनख दुन्दुभिः आनक दुन्दुभिः। It is called आनक दुन्दुभिः। आनक दुन्दुभिः बोलेगा तो किसका नाम है? वसुदेव का नाम है। क्यों आनक दुन्दुभिः नाम आया है? इनको भी उत्तर देने के लिए नहीं जाना चाहिए, ये तुरंत बताता है। ये दोनों को कैंसिल कर दो लिस्ट में। जैसी वसुदेव ने जन्म लिया है, उसी समय इतना सब कुछ वाद्य का घोष होता है, राइट? इसलिए उनका नाम रख दिया है आनक दुन्दुभिः। ओके, तो मूविंग ऑन टू दैट, प्राप्तम कालम प्रतिव्योढुम इदम तत्रा अपद्यत। ओके, so let me request अनंता प्रभु, आप पढ़िए अनुवाद, सरिता शब्दार्थ अनुवाद, हिंदी हिंदी हिंदी, make it fast. हरे कृष्ण प्रभु जी। या हाँ, क्या हुआ अनंता? 1 second. हाँ, 1 minute प्रभु जी। अनुवाद एवं तात्पर्य से प्रभुपाद के द्वारा जी। अनुवाद। जब वसुदेव ने देखा कि कंस अपनी बहन देवकी को मार डालने पर तुला हुआ है,
तो उसने अपने मन में गंभीरता पूर्वक सोचा, मृत्यु को आया हुआ। प्रभु शब्दार्थ पढ़ने का प्रभु। सॉरी प्रभु जी। शब्दार्थ, निर्बंधनम करने के संकल्प को, तस्य उस कंस का, तम उस संकल्प को, ज्ञातवा जानकर, विचिंत्य गहराई से सोचकर, आनक दुंदुभि वसुदेव प्राप्तम आया हुआ, कालम आसन्न मृत्यु संकट को, प्रतिव्यूढ़ुम ऐसे कार्यों से रोकने के लिए, इदम यह, तत्र वहां, अन्वपद्यत अन्य उपायों को सोचा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद करो, जय श्रील प्रभुपाद। जब वसुदेव ने देखा कि कंस अपनी बहन देवकी को मार डालने पर तुला हुआ है, तो उसने अपने मन में ही गंभीरतापूर्वक सोचा। मृत्यु को आया हुआ देखकर उसने कंस को रोकने का दूसरा उपाय सोचा। हरे कृष्णा। बस बस, हरे कृष्णा। सभी भक्तों से एक निवेदन है, वापस एक बार बोल रहा हूं, ध्यान पूर्वक यहाँ थोड़ा आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को समय नुकसान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4 घंटा बोल के उसमें ऐसे ऐसे थोड़ा कम हो जाता है। हमको कम से कम 3 घंटों पूरी तरफ से उपयोग करना बराबर। So we have to utilize the time very carefully. Whenever I call out the names, please read and be attentive how far we have gone, where we are, which shloka, whether we have done the all the things. So respond also. Those who are on the online, जो भी भक्त ऑनलाइन में है, तुरंत आपको उत्तर दे देगा तो अच्छा है, ठीक है। In this connection, I'll tell one good story. All of you listen carefully. Our attentiveness should not be like this. प्राचीन काल में गुरुकुल आप लोग देखा होगा, वहां तो कुटिल है, राइट। वो कुटिल में क्या होता है, ऊपर बहुत कुछ जाता आता है, राइट। एक क्लास होता था, उसका टीचर तो उनको बच्चों को कुछ सिखाता था। हरे कृष्णा। सो उसी समय हरे कृष्णा ध्यान पूर्वक सुनो, हरे हरि बोल, those who are entering also. So उन्होंने सब कुछ समझा दिया बच्चों को। एक बच्चों को बुलाया, अभी किधर तक मैंने आपको समझाया करके। उसी समय वो बच्चा क्या, हरे कृष्णा गीता लीव इट। सो उसी समय वो बच्चा क्या बताया, यस मैं सब कुछ समझ लिया सर, ऐसे बोला। और दूसरा बच्चों को बुलाया, आप किधर तक समझाया, मैं किधर तक कथा बताया। उन्होंने बताया, हाँ सर मैं पूरा सुन लिया। फिर सर पूछा था, मैं किधर रुका है कथा। उन्होंने बताया, हाँ एक चूहा है, वो बाहर निकल गया, उसका पूछा बाकी रह गया। क्यों? उन्होंने ऊपर देखता है, वो ताच शेड होता है ना, उसको हिंदी में क्या बोलता है ब्रो, ऊपर रूफ को, चपरा में एक चूहा जाते थे, राइट। सुनो हरे कृष्णा, चूहा जाते थे, चूहा पूरा निकल गया नहीं, उसका पूछा बाकी रह गया। उन्होंने वो बताया। सार पूछा था, हाँ आप अच्छा सुना है, मैं कथा इतना बताया आपको, चूहा के बारे में बताया क्या? बाकी बच्चों उसको इतना मजाक उड़ाता है, उसको शेम लग गया। तो इसलिए कथा में क्या करना चाहिए, हमारा दोनों कान को, मन को इधर छोड़ना चाहिए, क्योंकि भागवत का ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है। सो यू हैव टू गिव फुल अटेंशन प्लीज, ओके। हरे कृष्णा। When Vasudeva saw that Kamsa was determined to kill his sister, he thought to himself very deeply. Considering the imminent danger of death, he thought of another plan to stop Kamsa. हरे कृष्णा। देखिए, भगवान का भक्त बोलेगा तो मैं हमेशा बोलता है चतुर। इसी समय वसुदेव तो भगवान का विशेष भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है। उन्होंने सोचा था, ऐसी उनको इतना उपदेश देख के फायदा नहीं। किसको? कंस को। कंस तो एकदम मूर्ख है, इतना उनको समझाने के बाद भी उसको दिमाग काम नहीं करता है, राइट। उसको आगे कुछ प्लान बना रहे। कौन? बोलिए सब लोग। वसुदेव। Okay, I speak in English and Hindi because I cannot mix Malayalam also because it is limited. So please all of you listen carefully. Please answer quickly. So यहाँ वसुदेव ने क्या किया, इतना उनको समझाया आत्मा और शरीर के बारे में, फिर भी उनको वो सुनने के लिए तैयारी नहीं है। उन्होंने निश्चित किया है, मेरा छोटी बहन को मार डालेगा। इसी समय वसुदेव ने सोचा था, I have to think of another plan. What is the situation now? The danger of death is there. The death imminent is very much there. So now I have to protect my wife. आजकल women's liberation बोलता है ना,
यहाँ उत्तर मिलते हैं आप लोगों को लिबरेशन का मतलब. Because Shastra says the girl will be protected till marriage by the father. After marriage, the husband will be taking care. The next one is after the departure of husband, the son will take care. This is our Shastra. So here, Vasudeva stands up to that. He is her husband and a very sweet husband. And he is concerned about his wife's death. So what does he do? He is planning something else to convince Kamsa from doing something more. Clear? So let's move on to the purport. So purport में request कर रहा हूँ Rajesh. Purport by Srila Prabhupada. Can you scroll down a bit, please, Prabhu? Yeah, thank you. Yeah, purport by Srila Prabhupada ki jai. Although Vasudeva saw the imminent danger that his wife Devaki would be killed, he was convinced of his welfare because at this birth, the demigods had played drums and kettle drums. He therefore attempted another way to save Devaki. अभी दूसरा मार्ग खोज रहे. आजकल डॉक्टर एक डॉक्टर हाँ ना बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? सेकंड ओपिनियन, राइट? यहाँ उन्होंने दूसरा के पास जाने की जरूरत नहीं. ये तो भगवान का भक्त है, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है. अपना दिमाग को चला के उन्होंने दूसरा मार्ग खोज रहे हैं. हाउ टू प्रोटेक्ट दिस. क्लियर? हरे कृष्णा. सो मूविंग ऑन टू 48. मृत्युर बुद्धि मथा पोह्यो यावत् बुद्धि बलोधयम् यदि असौ न निवर्तेत नापराधो अस्ति देहिनः. Okay, Vidya ji, quick. Hare Krishna Prabhu. Translation, synonyms and translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Mrityuhu, death, buddhimata, by an intelligent person, apohyaha, should be avoided, yavat, as long as, buddhi, bhala, yudayam, intelligence and bodily strength are present, yadi, if, asau, that death, na nivartate, cannot be checked, na, not, aparadaha, offense, asti, there is, dehinaha, of the person in danger of death. Translation. As long as he has intelligence and bodily strength, an intelligent person must try to avoid death. This is the duty of every embodied person. But if death cannot be avoided in spite of one's endeavors, a person facing death commits no offenses. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. I tell you, this lesson is for all of us. Very carefully listen. The translation, read it again. As long as he has intelligence and body strength. आजकल जितना भी देखो सुसाइड का बारे में, हर सुसाइड केस में क्या होता है? The first portion is missing. What is that? Intelligence is missing. That's why they take a wrong step. The second thing, bodily strength. They have bodily strength, but the mental strength is lost. Clear? So it is against Shastra. Committing suicide is against the Shastra. It's very clear. Then further it says, an intelligent person must try to avoid death. Okay, then what does he say? This is the duty of every embodied person. हर एक मनुष्य को ये कर्तव्य है. One should not take up the other extreme step. Okay, then moving on to that. But if death cannot be avoided in spite of one's endeavors, a person facing death commits no offense. अगर उनको मृत्यु तो निश्चित है, जितना भी उन्होंने प्रयास किया है, सब असफलता हो गया ना, असफलता हो गया, then automatically he is not committing any offense. इसलिए जितना भी जैसी suicide होता है, हर एक में क्या होता है? Offense होता है. That's why the particular Atma is roaming around. What do we say? Booth, or what is it? Ghost, whatever you say. That means intelligence is lost, means all these things will happen. Clear? So one should be intelligent enough. How to gain intelligence? Coming to the satsang. Because the Shastras are ready here. Not in the movies, or not in the TV serial, or not in the... Clear? Okay. So moving on to the purport. I request Seema Kana Mataji, Hindi में पढ़ेगी?
अनुवाद, सॉरी तात्पर्य। Prabhuji, Hari I'll Prem read है। in some time, Prabhuji. Hare Krishna. ओके ओके, हरि प्रेम, ओके ओके, आपको बाद में बुलाता हूँ। हरि प्रेम आप पढ़ लो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़ लो तात्पर्य। तात्पर्य भाई शीला प्रभुपाद के द्वारा, जय श्री प्रभुपाद। असामयिक मृत्यु का सामना करने वाले व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है कि वह अपनी रक्षा का पूरा प्रयत्न करे। यद्यपि मृत्यु निश्चित है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उससे बचे और बिना विरोध के मृत्यु को वर्ण न करे, क्योंकि प्रत्येक जीव नित्य आत्मा है। क्योंकि मृत्यु इस जगत में निंदनीय जीवन पर थोपा गया दंड होती है। अतः वैदिक संस्कृति मृत्यु से बचने पर आधारित है। त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति। हर व्यक्ति को चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करके मृत्यु तथा पुनर्जन्म से बचने का प्रयास करे और जीवित रहने के लिए संघर्ष किए बिना मृत्यु के सामने घुटने न टेके। जो व्यक्ति मृत्यु को रोकने का प्रयास नहीं करता वह बुद्धिमान मनुष्य नहीं है। क्योंकि क्या बोल दिया? बुद्धिमान मनुष्य नहीं है। मृत्यु को अगर रोकने का प्रयास नहीं किया होगा तो इसको क्या कहते हैं? बुद्धू, राइट? Ignorant. So those who are committing this, it's very clear they have not taken a right decision. It is definitely a wrong decision. Okay. क्योंकि देवकी को आसान मृत्यु का सामना करना पड़ा। देवकी को आसन मृत्यु का सामना करना पड़ रहा था। अतएव वसुदेव का कर्तव्य था कि उसे प्राणपण से बचाते। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा ऊपर कीजिए। अतः उन्होंने कंस को फुसलाने का दूसरा तरीका सोचा जिससे देवकी को बचाया जा सके। हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna. Thank you. So that means it's very clear in the purport. What does it say? Let us try to understand. It is natural for a person facing untimely death to try his best to save himself. Right? Okay, moving on to that. This is the duty of one. कर्तव्य है, हमारा मृत्यु को सामना करना पड़ता है, उसमें से बचने के लिए हम लोग कोशिश करना है। One should always try. Why? Why the Shastra says like this? Tell me. अपने आप को बचाने का है, क्यों? Why should we save ourselves from the danger of death? Tell me, quick. 1, 2, 3. आप दोनों को नहीं देखेगा, बाकी सबको देखेगा। हाँ, Hare Krishna. If you have understood the question, I will repeat again. Why should we save from ourselves from the death? Why? What is the reason? Huh? Hare Krishna. So any other answer? Mataji high level में बात किया. Anyone else? I request the newcomers, please answer. If you have got a different answer also, no problem. I honestly request you, please participate, because what is more important is it's an interaction. It's not my speaking all the time. You know pretty well, or many of you may not know, our session is always like that. We will keep it alive so that when you interact, the live session will be there. Otherwise, it will be one-sided talking, which we generally don't encourage. Hare Krishna. वापस एक बार पूछता हूँ. Wait. You are not eligible to answer. Hare Krishna. Hare Krishna. One more time. Why should we save ourselves from the death? Why we take efforts? What is the reason? जीने के लिए. प्रभु जीना पड़ेगा. हाँ. और नया भक्त लोग, please try to answer whatever you understood. हाँ. हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा हिंदी में थोड़ा बोलिए उसको. हाँ, बोल रहा हूँ. हरे कृष्णा. हमको मृत्यु से बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्यों?
Oh, Prabhu, you don't answer. You are all answering. हरे कृष्णा प्रभु. एक मिनट. सवाल आपके लिए नहीं है, यहाँ सामने जो बेटा उनके लिए. Hare Krishna. Any other answer, please? Please do not hesitate. I will ask once again in English. Should we take efforts to avoid death? Why should we avoid death? What is the purpose of it? Huh? No, he can answer. Oh, ये भी हाई लेवल है. माता जी लोग तो समझदारी है. एक माता जी अच्छी सवाल बताया, उत्तर बता. Yeah, that's the reason. What is a precious gift? Oh, wonderful. देखिए, ये हम मनुष्य शरीर प्राप्त किया है कितना योनि के बाद? 84 लाख योनि के बाद. दुर्लभ मानुष्य. सो हमको क्या करना चाहिए? इसको बचाने का है. आगे जाके ब्यूटिशियन करना है? नहीं. ये शरीर किसके लिए उपयोग करना है? भगवत सेवा में, मंदिर मार्जनादिषु. राइट. हम अभी गया था कुछ हफ्ते के पहले केरला में एक विशेष दिव्य देशम है, चंगानूर. वो डिस्ट्रिक्ट से कोई आ रहा है क्या? इधर हाथ उठाइए. चंगानूर वाली. चंगानूर कोई नहीं है. राइट. हाँ, चंगानूर. चंगानूर में एक विशेष दिव्य स्थान है, तिरुचिट्टारू. किसको मालूम है? तिरुचिट्टारू मालूम नहीं. ठीक है. सो ये मंदिर में they are doing the renovation work. At that time, I was going and doing something, and at that time they were devotees who are collecting funds. No, they said, "You are new to this. How we are doing? We want to do that." Then again he was asking, "How we are doing it?" Because we want to do it. That's why we are doing it. That means we are having the human form to do all these things. What is called as devotional service, cleaning the temple, right? So this is very important. So one should understand the human form is meant for doing devotional service. Devotional service means, try to understand, it's not a big tough job. भक्ति मार्ग में भक्ति सेवन बोलेगा तो ध्यान पूर्वक सुनिए. अब भगवान का मूर्ति के लिए आप फूल माला बनाएगा तो भी सेवा है, राइट? मंदिर को पूरा साफ करने के लिए झाड़ू पोछा डालेगा तो भी सेवा है. अंदर मूर्ति के अंदर आपको अभिषेक करेगा तो भी वो भी सेवा है, राइट? फिर उधर घंटी होता है ना, वो बजाएगा तो वो भी सेवा है. अगर परिक्रमा करेगा तो भी वो भी सेवा है, राइट? This is devotional service. But everybody says, "Oh, ISKCON means devotional service, a big term." No, it's a very simple term. शरीर किसके लिए दिया है? अभी इसके लिए दिया है. अगर हम लोग दूसरा एनिमल शरीर में है, कर सकते क्या? Right? So when you are a human form, you can do it. So that's the reason it is explained here. One should save themselves from the death. That's why we go to Apollo Hospital. So many hospitals. So, but try to understand the purpose of saving ourselves from the death is only to serve the Lord further, not for any other purpose. Try to remember, definitely we have to save, but the purpose we should understand, not for enjoying anything. You have got a puppy, dippy, something like that, not with that. That is not the purpose of it. Okay, Hare Krishna. Moving on. Although death is sure, everyone should try to avoid it and not meet death without opposition, because every living soul is by nature eternal. Because death is a punishment. क्या बोलता है? मृत्यु बोलेगा तो एक दंड है, राइट? वो दंड से क्यों बच रहा है? भगवान का सेवा के लिए, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है. So there is a wonderful new movie coming. We have to go and see. That is not the purpose, right, boys? Okay. He's completely leap into the good. Hare Krishna, Krishna Bhakti mein. So we have to understand the purpose. So Tyaktadeham Punarjanma, this is the meaning of it. So we can understand what is reality. Everyone should try to avoid it, and rebirth is
cultivating spiritual life and should not submit to death without struggling to survive. One should not try to stop death. He is not an intelligent human being, because Devaki was face to face with imminent death, but it was Vasudeva's duty to save her. देखो भगवत गीता में भगवान क्या बताता है? स्त्रियों, वैश्या तथा शूद्रा, because generally they are supposed to be taken care by this menfolk. Undoubtedly, women are very brilliant. They hold the position of president, so and so, so many positions, undoubtedly. But they need, as per the Shastra, they need a protection. Hare Krishna. So moving on to that, he therefore considered another way to approach Devaki could be saved. Pradaya mrityave putrane mochaye kripanane imam sutame yadi jaye ran mrityu vana mrityeta chet viparyayo vakim na yasyad kirdatur duratyaya upastito nivarteta nivritaha punar apatet. Okay, I request now Purnananda Prabhu, शब्दार्थ पढ़ो. किधर गया? वो प्रसाद बांटने के लिए गया. Okay, I request Vinod Vrajeshwara. Quick. Vrijesh. Hare Krishna, Yeah. Prabhu. Start. Synonyms and translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Pradaya, promising to deliver. Mritave, unto Kamsa, who is death personified for Devaki. Putran, my sons. Mochaye, I am releasing her from imminent danger. Kripanam, innocent. Imam, Devaki. Sutaha, sons. Me, my. Yadi, whether. Jairen, should take birth. Mrityuhu, Kamsa. Va, or. Na, not. Mrityaye, should die. Chet, if. Viparyaha, just the opposite. Va, or. Kim, whether. Na, not. Syat, it may happen. Gadihi, the moment. Dhatuhu, of providence. Duratyaya, very difficult to understand. Upastitaha, that which is permanently obtained. Nivartate, may stop. Nivartaha, Devaki's death, being stopped. Punaha, Mataji, it is Nivritaha. Nivritaha, sorry, Prabhu. Devaki's death being stopped. Punaha, apatet, in the future, if may happen, it may happen again. But what can I do? 1 minute. Yeah. Ratish, can you read the translation quick? Ratish? Okay. He's But not. majorly, Yeah, read it. 1 second, Prabhu. Translation by Srila Prabhupada ki jai. Vasudeva considered, by delivering all my sons to Krishna, who is death professional. Aisha? You read again? Vasudeva considered, by delivering all my sons to Kamsa, who is death personified, I shall save the life of Devaki. Perhaps Kamsa will die before my son take birth, or since he is already destined to die at the hands of my son, one of my sons may kill him. For the time being, let me promise to hand over my sons so that Kamsa will give up this immediate threat, and if in due course of time Kamsa dies, I shall have nothing to fear. Hare Krishna. So I'll tell you,
How Vasudeva was very intelligent, he was analyzing it. अगर हम लोग को तकलीफ होगा तो हम लोग तुरंत कुछ कार्य करता है, ये गलत है। कि हर चीज में हमको हमारा दिमाग को अप्लाई करना, इंटेलिजेंस को। We have to calmly think it. जितना हम लोग पूरी तरह से हमारा मन उसमें लगाता है, उसको प्रॉस एंड कॉन्स, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब उसमें ये करेगा तो क्या हो जाएगा, ये करेगा तो वो क्या हो जाए, ये नहीं करेगा तो क्या हो जाए, इतना हमको एनालिसिस करना पड़ेगा। तुरंत कुछ बोलेगा तो क्या होता है, तुरंत जो करेगा तो कभी भी गड़बड़ी होता है। अब सबको याद होगा, क्योंकि ये गलती से क्या हो जाता है, अनेक गलतियों और आगे रहता है। जितना शांतिपूर्वक हम करेगा तो जो दुर्घटना है उसमें से बचना आसान होता है। So this is what I explained. Vasudeva was a brilliant person. He is a devotee of the Lord. So he was analyzing all the options. Right? आजकल बोलते हैं ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, like that. आजकल वो मैनेजमेंट सिस्टम में आ गया। पहला जमाने में इतना स्टाइल यूज नहीं करता था, बहुत आसानी से ऑप्शंस देखता था। Okay, whatever it is. So moving on to that, here Vasudeva is very brilliant and he is trying to analyze what are the things. Okay, Purnanand, are you ready now? Ready, वो चार्जिंग पे था इसके लिए। purport में His Divine Grace Srila Prabhupada की जय। Vasudeva wanted to save the life. Vasudeva बेटा नहीं है इधर। अच्छा, वसुदेव। मैं बेटा को बोल रहा हूँ, आप पिता से आपको हमेशा याद करते करते। अच्छा ऐसा क्या? वसुदेव, पढ़ो। Vasudeva wanted to save the life of Devaki by promising to deliver his sons to Kamsa. In the future, he thought Kamsa may die, or I may not beget any sons. Even if a son is born and I deliver him to Kamsa, Kamsa may die at his hands, for by providence anything could happen. It is very difficult to understand how things are managed by providence. Thus Vasudeva decided that he would... Vasudeva again you are telling. Prabhu, it's Vasudeva. Vasudeva, sorry. Thus Vasudeva decided that he would promise to deliver his sons to the hands of Kamsa in order to save Devaki from the imminent danger of death. Hare Krishna, thank you. Hare Krishna. So, अभी इसमें अनुवाद में जो लिखता है वो देखेंगे, उसके बाद तात्पर्य में क्या बताता है। जितना भी बच्चा पैदा होता है, अगर कंस को देगा तो, क्योंकि उसमें क्या बताया, 8वां गर्भ कंस को मारने वाला है। हरे कृष्णा, सब लोग ध्यान से पूर्वक सुनो, क्या बता रहा था, 8वां गर्भ बोलेगा तो उसमें मेल भी हो सकते, फीमेल भी हो सकते हैं। उसी दिन में एक स्कैनिंग मशीन नहीं था, इतना ही बस। आजकल स्कैनिंग मशीन किधर भी नहीं बताता, इवन इंडिया में भी दे आर नॉट रिवीलिंग इट। मैं बॉय और अ गर्ल, they have globally they have stopped, I think so, maybe. Okay, so coming back to the situation, what is happening here is, so it's very clearly understood Vasudeva was thinking of all options. At this stage, what he is telling, in case if I deliver the sons to Kamsa, all will be killed, right? Then what does he say? I shall save Devaki first. देखिए इतना बुद्धिमान रहता है। उन्होंने क्या बताता है, आपको जितना भी बच्चा पैदा हो जाएगा आपको दूंगा, वो मार डालो, मगर मेरा पत्नी को छोड़ो। ये ऑप्शन उन्होंने ढूंढा था। नेक्स्ट ऑप्शन व्हाट इज ही से, परहैप्स Kamsa will die before my sons take birth. उतना उनमें मन में इतना आशा है। क्या बता रहे, जैसे उन्होंने अभी देवकी को छोड़ देता है। सुनो, हरे कृष्णा, प्लीज अटेंटिवली लिसन, क्योंकि बच्चा जाने दो मगर पत्नी को बचाओ। डॉक्टर आजकल वही फिलॉसफी रखता है, राइट? सो हियर आल्सो दिस इज व्हाट आई टेल यू, शास्त्र इज द गाइडलाइंस फॉर अस। सो यहाँ उन्होंने क्या सोचा था, पत्नी को अभी बचाएगा, बच्चों आगे जाने दो, राइट? उन्होंने आगे क्या सोचा था, इसी बच्चा पैदा होते रहते ना, उसी समय पे 8वां तक, वो तो उसके पहले वो मर गया तो मैं बच्चों को बचा सकता, ऐसी सोचा था। सो देन व्हाट इज ही से, सिंस ही इज ऑलरेडी डेस्टिन्ड टू डाई एट द हैंड्स ऑफ माय सन, राइट? 8वां बच्चा आके उसको मार डालेगा, राइट? सो वन ऑफ माय सन्स मे किल हिम, राइट? सो हिज प्लान इज टू सेव वाइफ and give the children so that he can kill. The 8th one will come and kill him.
This is the option he thought. Then what does he say? For the time being, let me promise to hand over my sons to Kansa. Will give up his immediate threat. What is that? अभी जो भय है और जो मृत्यु है देवकी के सामने है, उसमें से उसको बचाने के लिए मैं उनको क्या अभी वादा देगा, मेरा जितना भी पुत्र पैदा होता है आपको दूंगा, आप मार सकते। क्लियर? आगे क्या बताते हैं? And if in due course of time Kansa dies, I shall have nothing to fear. उसके पहले उन्होंने मर गया तो भी मेरे को प्रॉब्लम। So he was planning like that. Okay, is it clear now? Anybody has got any questions? Please ask now. Huh? So there was it was destined for him to die, right? No matter what, 100% he was going to die, right? So there's nothing Kamsa could have done to change that, right? 100%. Then why did they go through the trouble of switching the baby and then doing this? Because anyway, if he would have taken the baby, he couldn't have changed anything now, because he was going to die at the hands of that baby no matter what. The eighth baby. Eighth baby, no matter what. Okay. So why did they go through the trouble of switching the baby? And then, Yeah, he's talking about the seventh child. No, eighth child. Switching Sorry, eighth child. Even seventh child also shifted. Two shifting are happening. One shifting is from Devaki womb to Rohini. The next thing is delivered and changed. Yeah. Who is going to die? Okay. But only thing, when the eighth child comes, he is going to be dying. Until then, he may die or may not die. Yeah, I know. But they went through all the trouble to switch the baby and then have him grow up in another town. But there was already 100% chance that he was going to die to that baby. That baby would not die at that point. Or Kamsa would die on the spot. Thanks to her, right? So then, why did they go through all the trouble? Okay. All the trouble, it's very simple. See, the plan, as I told you, ABC, right? This is what, again, it works like this. Vasudeva was instructed by the Lord through the Paramatma. Clear? When we talk, we are analyzing, no? The Dadami Buddhi Yoga, Bhagavad Gita mein kya batata? Dadami. So the intelligence comes from the Lord. He gives you, I'll tell you, no, many occasions, suddenly some good decision we take, we will claim, oh, I said rightly at the time. Otherwise, we could not have saved it. उसी समय मेरे सही दिमाग चलाया, मैं सही उत्तर दिया, इसके वजह से मैं उस सिचुएशन को बचाया. बोलता नहीं बोलता हम लोग? बोलता नहीं बोलता हम लोग? राइट? सो वो कौन बुद्धि देने वाला है? वही भगवान है. सो यहाँ इन्होंने सवाल पूछ रहे, क्यों ये सातवां जो बच्चा पैदा हो रहा है, किसका गर्भ में? देवकी के गर्भ में. उसको किधर शिफ्ट किया? रोहिणी के गर्भ में शिफ्ट किया. वो शिफ्टिंग वगैरह क्या जरूरत है? कैसे भी ऑटो आएगा तो कम्स तो मर जाएगा. फिर क्यों ऐसा करना? दिस इज ओके, राइट? Because 100% the eighth one was going to kill Kamsa. Right? So if they wouldn't have changed the baby and have him grown up, Kamsa would have probably died very soon. Oh, हरे कृष्णा. ये सवाल अलग है. देखिए वो क्या पूछ रहे हैं. हरे कृष्णा. सबको याद है ना कृष्ण जन्म? आगे आने वाला अभी समझाता हूँ. ये बच्चा ये शुरू किया. See, I'll tell you, the Ashariri says eighth child of Devaki will kill Kamsa, right? So here, what Vasudeva is planning, let me save my wife, but let him kill my sons. In any case, my eighth child will come and kill Kamsa. Okay? And this boy's question is, why when the eighth son is born to Devaki, why he shifted to Gokul? And why the girl came here? Who is the girl? Right? Yoga Maya or Maya. Let us say Maya. Okay? Or Parashakti Devi, Jobi. Right? Why that's the case? I'll tell you the reason behind it. What is the purpose of Krishna coming? You don't answer, huh? ये हाथ प्रतीक हाथ मत उठाओ. Hare Krishna, why the Lord appeared? What Bhagavad Gita says? Quick. There are shloka. Huh? ये माता जी भी अच्छी सवाल बताए, उत्तर बताए. ये भी देरा क्लास में अच्छा वो बहुत कुछ सीख लिया उन्होंने. अच्छा और कोई
Very good. Very good. क्योंकि भगवान को क्या करना पड़ता है? धर्म को पालन करना है, अधर्म को विनष्ट करना है. Right? Understand? Another point is the Lord came down to reduce the weight on the earth planet. You know that? Bhumi went and complained to Brahmaji. There are a lot of atrocities, lot of scoundrels, rascals are there. Right? उसको निकालना पड़ेगा. इसलिए भगवान क्या सोचा था, अभी ये कंस को मार डालेगा तो उनका दोस्त लोग कितना लांग से पूतना से लेकर अनेक है, हर एक को भगवान मारना चाहिए. राइट? अगेन भगवान इज व्हाट? चतुर, इंटेलिजेंट. So his plan never fails. This is what we have to understand. Again and again and again, we plan so many things, but it never happened. That's why even the Westerners say, man proposes, right? So we have to understand, whenever we try to plan, submit there, let the plan success. But we never do that. We think we are more intelligent than. Hare Krishna. Yeah. All the leelas will happen in Vrindavan. Yeah, that's another aspect. Yeah. But in any case, what he says is right. Because after killing comes also, he can do the Vrindavan Leela. Make it fast. Don't delay. Okay. Bhagavan Vaikundathilirne avana piece aakam. Inna avadar edukanu ittara avadar edukanu. So this is a peculiar question all the time. Yes, correct. So भगवान अपना दाम में रहकर इसको उड़ा सकते हैं. Right? Remote control में आजकल करता ना. Right? Right. Listen carefully. You have to understand basic things. Right? देखिए, भगवान अपना दाम में बैठ के बहुत कुछ कर सकता है. आप इतना मत सोचो. ये सृष्टि को पूरा संहार करने वाला कौन है? प्रलय कैसे होता है? भगवान आके करता है क्या? He can do it. The Lord wishes. You cannot wish that. What's the name? Bapu cannot wish that. The Lord has wished. Clear? Right? No. That's why I'm telling. Bapu cannot wish this. The Lord wishes something else. You try to understand. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Clear? Okay. Next. Agner yata daru yoga yogayoho adrishtato anyan asai nimittam asti evam hi jantor api durvibhavyoho bhavyah sharira samyoga viyoga hetuhu angeryata daru. That's a tune for this. I have done it wrongly. Okay, no problem. Okay. So moving on to the word by word meaning. Please, I have to rush now. It is getting slow down. Vijay Surendra Mataji, quick synonyms, quick. Hare Krishna Mata, Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Translation by Srila Prabhu. No, synonyms, okay. Agne of a fire in the forest, Yatha as Daru of wood, Viyoga Yogayo of both the escaping and the capturing, Adrishtaha than unseen providence, Anyat some other reason or accidents, Na not, Nimittam a cause, Asti there is, Evam in this way, he certainly, Janto of the living being, Api indeed, Durvibhavaya cannot be found out. Sharira of the body, Samyoga of the accepting, Viyoga or of the giving up, Hetuhu the cause. Hare Krishna Prabhu. Sharanagata Mataji, translation. Sharanagata. Krishna. Yeah, translation. Hare Krishna. When a fire for some unseen reason leaps over one piece of wood and sets fire to the next, the reason is destiny. Similarly, when a living being accepts one kind of body and leaves aside another, there is no other reason than unseen destiny. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. So, purport, I request Shri Kavita Mataji.
Purport by Srila Prabhupada ki jai. When there is a fire in a village, the fire sometimes jumps over one house and burns another. Similarly, when there is a forest fire, the fire sometimes jumps over one tree and catches another. Why this happens, no one can say. One may set forth some imaginary reason why the nearest tree or house did not catch fire, whereas a tree or house in a distant place did. But actually, the reason is destiny. This reason also applies to the transmigration of the soul, by which a prime minister in one life may become a dog in the next. The work of unseen destiny cannot be ascertained by practical experimental knowledge, and therefore one must be satisfied by reasoning that everything is done by supreme providence. Hare Krishna. Jai, Jai, wonderful. Bhagya, providence. विधि का विधान है. Okay. हरे कृष्णा. अभी देखिए इसमें अच्छा उदाहरण दिया हुआ है, क्योंकि एक बिल्डिंग में आग लग गया, राइट, दूसरा बिल्डिंग में वो पहुंचा देता है, राइट, उसमें नहीं है मगर इसमें से पहुंच गया हुआ. इसका मतलब क्या है? विधि का विधान है. That is destiny. We will say, oh, in our building there was no fire. I don't know how all of a sudden the fire came. Right? We say that, right? It is all astonishing for us. Why? Because our knowledge is very limited. The providence. What is it? Providence. विधि का विधान है, वो बिल्डिंग में भी आग लगना चाहिए. ऐसी अभी देखिए वन में आग लगता है, राइट, जो व्यक्ति करता है एक ही, और इतना समझो, generally forest fire, how it happen, two trees when they brush each other the fire starts, right? मगर वो दोनों झाड़ और वृक्ष तो जलना चाहिए, राइट, बाकी पूरा वन को क्यों जलाता है? That is called destiny. अगर यहाँ से जाके उन्होंने फायर फाइटर को जाके तो कर सकते क्या? कैलिफोर्निया में, राइट, एलए बोलते हैं लोग, एलए बोलते हैं ना, लॉस एंजलिस को एलए बोलते हैं. वहां इतना फॉरेस्ट फायर आता है, ये यूएस गवर्नमेंट कुछ कर सकते क्या? ऑस्ट्रेलिया में इतना फॉरेस्ट फायर आता है, कुछ कर सकते क्या? कुछ भी नहीं कर सकते. दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी. नथिंग कैन बी डन. So this is what it is explained here. This is purely a destiny. We have to take efforts, but whatever happens finally, that you have to call it as destiny. Before taking efforts, oh, it is destiny, then it is called what? Lazy. Right? Understood or not? हम लोग प्रयास करते रहना है, मगर चुप रहेगा तो क्या होता है? लेजी बन जाता है. So यहां भी वही बताता है, एक घर पे आग लग गया तो दूसरे में पहुंचता है, उसको कहते हैं विधि का विधान. क्लियर? So moving on to the next shloka. एवं विमृश्य तम पापम यावत् आत्मनि दर्शनम पूजयामास वै शौरिः बहुमान पुरस्सरम्. Okay, so this I request Vanamali. Here is this number. All the Vanamali is here. Okay, leave it. I called wrongly then. Okay. Sangeeta Mataji, can you read that synonyms and translation quickly? Sangeeta Mataji, quick. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, translation? नहीं, सुनो, synonyms translation दोनों. Yeah, okay. Meaning Sabdarth and Hindi or English? English is okay, no problem. पढ़ लो. Okay, Hindi also. शब्दार्थ बाय श्री प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद. एवं इस प्रकार से विस्मय सोच विचार कर तम कंस को पापम अत्यंत पापी यथा संभव आत्मनि दर्शनम अपनी बुद्धि पर भरसक पूज्याम आश प्रशंसा की वही निसंदेह वसुदेव ने बहुमान सत्कार करते हुए
पुनःसरम उसके सामने। अनुवाद श्री प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। इस तरह इस विषय पर अपनी बुद्धि से भरपूर विचार करने के बाद वसुदेव ने पापी कंस को बड़े ही आदर पूर्वक अपना प्रस्ताव रखा। प्रभु जी ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, हरे कृष्णा। चलो अभी ये श्लोक में क्या बताता है? ट्रांसलेशन। After thus considering the matter as far as knowledge would allow, Vasudeva submitted his proposal to this sinful Kamsa with great respect. देखिए यहाँ वसुदेव ने क्या अभी कोशिश कर रहा है? उन्होंने सेकंड प्लान बी किसको सबमिट किया है? अभी कंस को सबमिट किया है। उनका उत्तर के लिए with respect he is waiting for it. That means I'll tell you, when the Lord allows us to do things, we have to do it with our full heart, 100% effort. हरे कृष्णा। 100% हम पूरी तरह से वो प्रयास करके फिर बाकी करना चाहिए, भगवान का पास छोड़ना चाहिए। यही बुद्धिमान है, क्योंकि उसमें फल हमको भोग करने के लिए कोशिश करेगा तो क्या हो जाएगा? अगर जीत किया होगा तो एकदम राइट, अगर हार गया तो और शोक, दोनों नहीं चाहिए। He leave it. So here what did he did? He did the plan and submitted to who? Kamsa. Hare Krishna. So moving on to the next shloka. Prasanna vadanambujo nirshamam nirshamsham nirapatrapam manasa juya manena vihasannidham abravite. Okay. हिंदी में डाल दो प्रभु। धर्मराज पढ़ लो शब्दार्थ अनुवाद पिक। धर्मराज। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तब शब्दार्थ प्रभुपाद द्वारा जय श्रील प्रभुपाद। प्रसन्न वदन अम्भोज वासुदेव जो बाहर से परम प्रसन्न लग रहे थे। निसंसम अत्यंत क्रूर निरपत्रम निर्लज कंस को मन से दृश्यमाने चिंता तथा दुख से पूर्ण व्यसन बाहर से हंसते हुए इदम अवृत इस प्रकार बोले। वासुदेव का मन चिंता से पूर्ण था क्योंकि उनकी पत्नी संकट में थी, किंतु क्रूर निर्लज तथा पापी कंस को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बनावटी हंसी लाते हुए वे इस प्रकार बोले। हरे कृष्णा। सो मूविंग ऑन टू परपोर्ट। रमेश अदनानी प्रभु तात्पर्य पढ़िए तुरंत क्विक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। कभी कभी संकटलीन स्थिति में कपट से काम चलाना पड़ता है, जैसा कि वसुदेव ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए किया। यह भौतिक जगत बहुत ही जटिल है और अपना कर्तव्य निभाने के लिए ऐसे दोहारी चाल अपनानी पड़ती है। वसुदेव ने कृष्ण को जन्म देने के लिए अपनी पत्नी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। इससे सूचित होता है कि कृष्ण तथा उनके हितों की रक्षा के लिए दोहारी चाल की काम लिया जाता है। पूर्व घोषित व्यवस्था के अनुसार कंस का वध करने के लिए कृष्ण को वसुदेव तथा देवकी से जन्म लेना था। अतः वसुदेव को स्थिति से निपटने के लिए हर प्रलय करना पड़ा। यद्यपि सारी घटनाएं कृष्ण द्वारा पूर्वज होती है, किंतु भक्त को कृष्ण की सेवा के लिए
हर संभव प्रयास करना होता है। कृष्ण स्वयं सर्वशक्तिमान है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भक्त को हाथ पर हाथ धरकर बैठना चाहिए और सब कुछ कृष्ण पर ही छोड़ देना चाहिए। भगवत गीता से भी यही उपदेश प्राप्त होता है। यद्यपि अर्जुन के लिए कृष्ण सब कुछ कर रहे हैं, किंतु अर्जुन कभी अहिंसक की तरह आलसी बनकर बैठा नहीं। वह युद्ध में यथाशक्ति लड़ने और विजयी बनने का प्रयास करता रहा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये श्लोक अंदर जो बता रहे हम अभी सीखेंगे। ट्रांसलेशन: Vasudeva's mind was full of anxiety because his wife was facing danger, but in order to please the cruel, shameless, sinful Kamsa, he externally smiled and spoke as follows. क्या हुआ? अपना पति को भी बचाने का समय आ गया वसुदेव को। उन्होंने क्या किया? जो मूर्ख कंस को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया? हंस के, क्योंकि अंदर तो हृदय में क्या होता है? तड़पता होता है, क्योंकि अपना पत्नी को बचाने का है, राइट। आगे उन्होंने बाहर से उन्होंने क्या करते? मुस्कुराते बताता है। कौन बता रहा है? किसको? ओके, ऑल आर अलर्ट। सो अभी परपोर्ट में देखिए, समटाइम्स वन मस्ट एक्ट डुप्लिसिटली मतलब रियलिटी, ओके, इन डेंजर पोजीशन। अभी देखिए, अगर हमको कुछ दुर्घटना आ गया तो, हरे कृष्णा, दुर्घटना आ गया तो वी कैन प्ले डुअल रोल। हरे कृष्णा, लिसन केयरफुली। हाँ, क्या किया उन्होंने? वेरी गुड। So what is, please come closer. Hare Krishna. Hare Krishna, please, I request you again and again, adjust yourself so that more devotees can sit comfortably. क्योंकि कोई भक्त तो बाजू में रूम में भी बैठा है, इसलिए मैंने माइक पकड़ लिया, उनको भी सुन सकते करके। ठीक है, अब जितना आ सकते हैं क्लोज आ जाओ। ठीक है। सो हियर प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बताता है? दुर्घटना समय पे वी कैन प्ले डुअल रोल, बाहर एक अंदर एक। यहाँ वसुदेव ने क्या किया? बाहर उनको प्रसन्न करने के लिए अपना मुख को थोड़ा प्रसन्न किया है, मगर अंदर क्या है? उनको विचार है। क्या विचार है? पत्नी को बचाना है। So this is what Prabhupada says. Then, as Vasudeva did to save his wife, the material world is complicated. Execute one's duty, one cannot avoid adopting such diplomacy. Diplomatic बोलते ना, चतुर। क्योंकि अपना पत्नी को उन्होंने बचाने के लिए उनसे क्रोधित से बोलेगा तो क्या हो जाएगा? मार देगा, राइट। मगर उन्होंने क्या किया? उनको दिखाने के लिए प्रसन्नता मुख, अंदर उनका हृदय में क्या है? ये कभी मर जाएगा, होता है ना, राइट। कभी कभी हमको ऐसी हाल होता है, बट वी कैन डू दैट डुअलिटी। क्या बोलते हैं इसको? डुप्लिसिटी बोलते हैं। डुप्लिसिटी अंग्रेजी में बोलते हैं। सो द्वंद्व करना चाहिए, बाहर एक अंदर एक, राइट। मगर दोस्त के साथ मत करो। हरे कृष्णा, ये याद रखो, दोस्त के साथ नहीं होना चाहिए, ये तो हमारा शत्रु के साथ हो सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे के तो he did everything possible to save his wife for the sake of begetting Krishna. कृष्णा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ऐसे किया है। ये देखो, सी द अंडरस्टैंडिंग। एक आचार्य का उनका परसेप्शन होता है ना, परसेप्शन बोलेंगे तो कैसे एक सिचुएशन को देखता है। If you see that why Vasudeva can do this, it is not correct. हृदय में उनके ऊपर द्वेष है, किसका ऊपर? कंस के ऊपर। मगर बाहर उनको कैसे बात करता है? मुस्कुराते हुए बात करता है। This is called duplicity. A devotee cannot do it, but here he does it for the sake of what? To beget Krishna, because he has to save कौन? देवकी को अगर बचेगा तो, बचाएगा तो क्या होता है? उनको आगे कृष्णा प्राप्त होता है। So for getting Krishna, we can do this, but we have to be very careful. So we have to be very careful in this situation. Then what does he say? According to the arrangements already foretold, Krishna was to appear through Vasudeva and Devaki to kill Kansa. So that's a pre-planned one. Nobody can change it. क्यों? विधि का
विधान है. Clear? So आगे देखिएगा तो Vasudev therefore had to do everything to save the situation. Although all the events were pre-arranged by Krishna, your devotee must try to his best to serve the purpose of Krishna. ये भगवान के लिए हम लोग बहुत ऐसे कुछ कर सकते हैं, मगर हम लोग जो करते हैं भगवान का प्रीति के लिए होना चाहिए, अपना प्रीति के लिए नहीं है. याद रखो, जो भी हम लोग करते हैं भगवान का प्रीति के लिए करना चाहिए. अगर हमारा प्रीति के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको तो पाप लगेगा. राइट. सो आगे देखेगा तो क्या बता रहे हैं, a devotee must try his best to serve the purpose of Krishna. Krishna himself is all powerful, but it is not that a devotee should therefore sit idly. Prabhupada क्या बताता है? One should not be lazy. They have to act for Krishna. They have to work for Krishna. कृष्ण के लिए हम लोग सेवा करना चाहिए, कृष्ण के लिए हम लोग दौड़ना चाहिए. अभी देखिए, so there is a situation wherein there is a temple, somebody comes and demolish, right? क्या करना पड़ेगा? हम देखते रहेंगे, वीडियो शूट करेंगे. आजकल ऐसे होता है ना, हाँ? जितना बुरा चलता है सब लोग वीडियो लेते हैं फिर पोस्ट करते हैं. It's a very bad practice. I'm telling you, मन में इतना विकल्प है, इतना कल्मश है. This is a very bad, and people are circulating this message, and people are interestingly seeing it. This is a very bad situation. क्योंकि आजकल YouTube देखेगा तो इतना बुरा चीज, अच्छा चीज बहुत कम है. इसको छोड़ दो, हाँ? YouTube को छोड़ दो, Facebook में इतना बुरा चीज आता है. This is a very bad practice. So यहाँ देखिए, what is more important is one has to serve the Lord, not for their own purpose. So one should not sit idly, then everything and leave everything to him. This instruction is found in the Bhagavad Gita. क्या कह रहे भगवान? कर्म करो, कर्म का फल को ऊपर इच्छा मत रखो. What is the श्लोका? ये सब लोग बोलते, आगे पीछे कोई बताओ ना, पीछे कोई भक्त बैठा हो ना, भक्त लोग बताओ, आप लोग भी. कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये तो श्लोक हर सिनेमा में आता ना. कर्मण्येवाधिकारस्ते कथाचन, कर्मणि. Hare Krishna. So moving on to that, here although Krishna was doing everything for Arjuna, युद्ध भूमि में सब कुछ किसने किया? भगवान कृष्ण ने किया, मगर पूरा रिवार्ड किसको गया? हाँ? So this is what we need. So भगवान जो चाहता है वो करेगा तो हमको क्या होता है? माला होता है. अगर नहीं है तो क्या माला होता है? लाठी, लाठी. So we have to understand, never sat down idly as non-violent gentleman. Rather, he tried to fight the best possible and be victorious. Okay, shloka number 54. Shri Vasudevavacha nahi asyaste bhayam saumya yadvai sahasarira vak sah sharira vak putran samarpayisye asya yataste bhayam uttitam. Okay. सीमा का नाम आता है, रेडी है, पढ़िए. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्णा. श्री वसुदेव वाचा, synonyms. Shri Vasudeva Vacha. Shri Vasudev said, "Na, not." Mataji, Vasudev said. Vasudeva said. Then na, not. He indeed. Asaya from Devaki. Devaki, they of you. Bhayam, fear. Somya, o most sober. Yat, which. Why indeed. Sa, that woman. Aha, dictated. Sarira, vak. A vibration without a body. Putran, all my sons. Samar Payesye, I shall deliver it to you. Asaya of her Devaki. Yatha, from whom. Te, your. Bhayam, fear. Uttahitam, has arisen. Prabhuji, I should read the translation. Wait, I'll give it to someone else, Mataji. Okay. Srinivas Sudarshan. Srinivas Sudarshan. Quick translation. Srinivas. Hare Krishna Babuji. Hare Krishna. Translation by Srila Prabhupada. Vasudeva said, O best of
the sober. You have nothing to fear from your sister Devaki because of what you have heard from the unseen woman. The cause of death will be her sons. Therefore, I promise that when she give birth to the sons from whom your fear has arisen, I shall deliver them all unto your hands. हरे कृष्णा। वसुदेव ने यहाँ क्या वादा किया है? हे कंस, आप चिंतित मत करो, आपका मृत्यु मेरा बहन से नहीं है, मगर ये मेरा बहन से नहीं, पत्नी से नहीं है। आप लोग चुप रहते, कोई भी बोलता नहीं है, मैं उधर। So you have to be alert. This is a test for you. हरे कृष्णा। So what does he say? ये मृत्यु आपको मेरा पत्नी से नहीं है, मेरा पत्नी नहीं है। वापस एक बार बोलता है, क्योंकि उनको संदेह आता है, क्योंकि वो अशरीरी क्या बोला था? तुम्हारा बहन का 8वां गर्भ से। सो उनको समझाने के लिए वापस क्या बताता है? मेरा 8वां गर्भ से, राइट? इसलिए जितना भी बच्चा पैदा होता है मेरा पत्नी को हर एक आपको दे देता हूं, आप मार डालो। ये तो कंस को दिखता है अच्छा है ये प्लान। क्यों बहन को मारना है? बहन को मारेगा तो क्या लगेगा? पाप लगेगा। उससे बढ़कर उसका जितना भी बच्चा पैदा होता है उसको मार डालो। See, the sin is one, but here the sin is 10 times. कितना बच्चा? 8 बच्चों को मारेगा तो क्या होता है? और भी मल्टीपल। उसका दिमाग वो काम नहीं करता है। So what he said, okay, this is what good, right? So moving on to that, so we can understand. Therefore, I promise when she gives birth to the sons from whom the fear is arising, I shall deliver all unto your hands. Okay, coming back to the purport. So Kamsa feared Devaki's existence because after her 8th pregnancy, she would give birth to a son whom would kill him. Vasudeva, therefore, to assure his brother-in-law the utmost safety, promised to bring them all the sons. He would not wait for the 8th son, but from the very beginning would deliver to the hands of Kamsa all the sons to which Devaki would give birth. This was the most liberal proposition offered by Vasudeva to Kamsa. Listen carefully. यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बताता है? वसुदेव ने जो प्लान दिया था, प्लान बी, उसमें क्या बताया? मेरा पत्नी को छोड़ो, मगर पत्नी के गर्भ में जितना भी उत्पन्न होता है 8 को मैं आपको दे देता हूँ। 8वां तो आपको मारने वाला है, मगर आपको संदेह होगा, इसलिए जब जैसी 1 से 8 तक पूरा आपको दे तो मार डालो। फिर कंस बोला था, oh, I can finish now. But later on, if you understand, it's a very interesting thing. Huh? This fellow says, no, only 8th is going to kill me. I will not kill the 7. ऐसी बोल दिया। कौन बोला? हाँ, मगर उसको कौन आके उंगली डाला? Good. All are very alert. नारद मुनि का लीला होता है ना, सचमुच करो, भगवान से बढ़कर लीला करने वाले नारद है। मैं आपको बताता हूँ, भगवान इसके लिए उनका सेक्रेटरी ऐसे होता है। आजकल मिनिस्ट्री ठीक है, मिनिस्टर बराबर होता है, उसका सेक्रेटरी गड़बड़ करता है, राइट? फिर उसको मिनिस्टर को उसको उतार देता है ऊपर से। तो यहाँ ऐसी कंस का भी ऐसी हाल हो गया, राइट? So let us try to understand further 55. श्री शुको उवाच प्रभु श्री शुको उवाच ससुर वदान निवर्वृते कंसत्तत् वाक्य सारवित् वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशत् गृहं। प्राविशत् कौन सा श्लोक है? जिनको मालूम है हाथ उठाइए फटाफट, देर मत करना, नहीं तुम तो डिस्क्वालिफाइड है तुम्हारा। प्राविशत् कौन सा श्लोक? क्विक, इतना टाइम लगता है? आप तो डिस्क्वालिफाइड है पहले से, आप कैसे बता? हाँ, बरहा पीडम नटवरोपुः
वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशत गीतवीर्भिः। हरे कृष्णा। देखिए, अगर टीवी में अंताक्षरी होगा तो घर पे बैठ के वो लोग उत्साह से बताएगा, मगर यहाँ तो सामने आपको ऐसी भगवत गीता और भागवतों के बारे में बोलेगा तो आप लोग जोर से बोलना चाहिए, राइट? You have to say, see, I'll tell you, anything related to the Lord, we have to do it joyfully. इसलिए भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? सुसुखम कर्तव्यम। भगवान को जो भी हम लोग सेवा करता है भक्ति में, प्रसन्नता मुख से करना है। जाके नहीं रहना कि पड़ोसी में, ओ मैं इतना जाके मंदिर में खर्चा किया, बोलेगा तो जितना भी किया वो पाइपलाइन में चला जाएगा। So we have to be very careful. When we do for the Lord, we have to be joyfully performed. Hare Krishna. Okay, so synonyms, everything I have to request now. Shankarnath, Shabdarth, quick. Shankarnath. Hare Krishna Prabhu. Sri Shukla Uvacha, Sri Shukadeva Goswami said, Swasuhu of his sister Devaki, Vadhat, from the act of killing, Nivartte, stopped for the time being, Kamsa, Tat Vakya, the words of Vasudeva, Sara with, knowing to be perfectly correct, Vasudeva, Api also, Tam, to him Kamsa, Pritaha, being satisfied, Prasasya, specifying more, Pravisat Graham, entered his own house. Hare Krishna. Translation. Nain Jaswani from Malaysia. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Sri Shukadev Goswami continued, Kamsa agreed to the logical arguments of Vasudeva, and having full faith in Vasudeva's words, he refrained from killing his sister. Vasudeva, being pleased with Kamsa, pacified him further and entered his own house. Hare Krishna. Continue the purport also. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Although Kamsa was a sinful demon, he believed that Vasudeva would never deviate from his word. The character of a pure devotee like Vasudeva is such that even so great a demon as Kamsa firmly believed in his words and was satisfied. Yasyastir bhaktir bhagavati akincha sarve gunais tatra samaste suraha. All good attributes are present in a devotee, so much so that even Kamsa believed in Vasudeva's words without a doubt. Hare Krishna. Hare Krishna. ये भक्त है, उसका नाम है नयन जसवानी। उनका पिताश्री और भाई आए थे, तीनों निकल गया। हाँ, ये भक्त अभी मलेशिया में पढ़ रही है। वहां उसका समय अभी तो 11:30 है, 4 घंटा ahead. She is sitting and listening to the Bhāgavata. This is the way we have to train our children. जिधर भी जाएगा तो भक्त में रहने के लिए आजकल बहुत कुछ chances है. So it's 11:30 there, but she sits and watches it and listens. So we have to train our children. बचपन से ही भगवत गीता सिखाओ. यही हमारा सनातन धर्म। असली संपत्ति बच्चों को क्या देना चाहिए? बैंक बैलेंस नहीं है, भगवत गीता और भागवत। Wonderful. Hare Krishna. Let's move on to the translation. Srila Sukadeva Goswami continued, Kamsa agreed to the logical arguments of Vasudeva, and having full faith in Vasudeva's words, he refrained from killing his sister. Vasudeva, being pleased with Kamsa, pacified him further and entered his own house. ऐसी उन्होंने बोलने के बाद, वसुदेव बोलने के बाद, कंस को मन में शांति आ गया, क्योंकि अपना बहन से कुछ होने वाला नहीं है, उनका 8वां गर्भ, क्योंकि जैसी मृत्यु आता है उसमें से बचने के लिए यहाँ देखिए कंस भी कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? अपना बहन को तलवार से मारने के लिए भी तैयार है। मतलब he is also wanting to live and to defeat the death. Clear? So here also similarly यहाँ वसुदेव भी अपना पत्नी को ये मृत्यु से बचाने के लिए प्रयास कर। So that means Vasudev took the right step, convincing his brother-in-law. ये सुनने के बाद वो कंस मालूम पड़ गया ये 8वां गर्भ से होने वाला है, इसको क्यों मारो? कभी कभी क्या होता है,
हमको तड़पता रहता मन में, we cannot understand what to do. अगर कोई दोस्त आके बताए तो हाँ ऐसे आइडिया भी है, वेरी गुड, थैंक यू, ऐसे बोलता ना, बोलता नहीं, धन्यवाद बोलना चाहिए कम से कम. Hare Krishna. So this way, here Kansa thanked his brother-in-law Vasudeva. Oh, your idea is good. So that means मूर्खता तो है, आसुरिक स्वभाव तो है, फिर भी थोड़ा सा इतना टुकड़ा है, क्या है? अच्छा गुण. Right? Moving on to that purport, let's move on to that. Also, Kansa was a sinful demon. He believed that Vasudeva would never deviate. Super. क्योंकि यहाँ कंस वसुदेव के ऊपर इतना विश्वास रखा था. Right? It's not an easy thing. क्योंकि अगर उन्होंने जो वादा किया नहीं किया होगा तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा. राइट? बट फिर भी उनको मालूम है एक साधु है, उसका जैसे मूर्ख नहीं है. इतना उसको मालूम है. So he said he will agree to that. So this is what Vasudeva would never deviate from his word. The character of a pure devotee like Vasudeva is such that even so great a demon firmly believed in his words. इतना मूर्खता भी, आसुरिक स्वभाव को भी मालूम हो गया, ये जो वादा देते हैं पक्का करने वाले आज का नेता लोग नहीं है. राइट? हरे कृष्णा. आगे बढ़. ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको बायहार्ट करना चाहिए, ये लिखे रख लो, ये श्लोक जरूरी है. यस्यास्य भक्ति भगवत किंचना सर्वे तत्र सर्वे गुणैः तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद् गुणान्. राइट? गुणो महान. राइट? मेमोरी से महद् गुणान् मनोरथेन सति धावतो बहिः. I tell you, this shloka is a gem of a shloka. हरे कृष्णा. ये स्कंद वगैरह दिखाओ भाई. ये 5वां स्कंद में 18 स्कंद अध्याय में श्लोका संख्या 12. ये चैप्टर रघुगुणा को उपदेश दे रहे कौन? जड़ भरत. जड़ भरत चरित्र सबको मालूम है. ये राजा भरत था, उनको एक हिरण के ऊपर एकदम आसक्ति हो गया. वो मरते वक्त उसका चिंतन में रह गया. अगला जन्म क्या शरीर मिला उनको? हिरण का मिला. राइट? फिर उसके बाद भगवत कृपा से उनको वापस भगवान का याद आ गया हिरण का शरीर में. उसी समय भगवान उनको कृपा करके वापस एक बार मनुष्य शरीर दिया. वो क्या नाम है? जड़ भरत. ये भरत महाराज का नाम से ही हमारा देश को क्या बोलता है? इंडिया नहीं है, क्या है? भारत. अगर आगे किसी से बात करेंगे तो क्या बोलेगा? भारत. क्योंकि हमारा नाम नहीं लूंगा, उन्होंने हमेशा बोलता है भारत. So you have to say भारत. जय भारत. Right? Okay. So moving on to that, this is a very interesting thing. Translation. Translation किसी को देने का ना? नहीं दिया ना? अच्छा. Okay. Can you go to the shloka once again? The shloka is amazing shloka. Hare Krishna. यस्यास्य भक्तिर् भगवत किंचना सर्वे गुणैः तत्र समासते सुराः. सुरा मतलब कौन है? देवास. राइट? आगे क्या बात? हराव भक्त. हरा मतलब अपहरण. अपहरण होता है. हराव भक्तस्य. अभक्तस्य मतलब क्या है? भक्त अभक्त, ऑपोजिट. ओके? भक्त अभक्त. So God will always be there. हरे कृष्णा. यहाँ देखिए कुतो महत् गुणान. बाहर अभी देखिए बच्चों लोग जो टीचर आजकल ये सिखाते वक्त बहुत कुछ गड़बड़ किया है. कुतो नहीं है, कुतो. टीओ शब्द आएगा तो अंग्रेजी में पढ़ते वक्त याद रखना, कुतो महत् गुणान. मनोरथे. मनोरथे मीन्स मन को आकर्षण करने वाले. रति बोलेगा तो क्या है? आकर्षण. मन को आकर्षण करने वाले. मनोरथेन सति धावतो बहिः. अच्छा, अनुवाद दिखाइए प्रभु. Translation. All the devatas and their exalted qualities such as religion, knowledge, renunciation become manifest in the body of one who has developed unalloyed devotion for the Supreme Lord. जो भक्ति को भगवान के ऊपर पूर्ण तरह
भक्ति में मग्न हो गया तो उनका अंदर जो देवता को विशेष गुण होता है वो मनुष्य के अंदर भी आ सकता है, मनुष्य नहीं वो भक्त के अंदर आ सकता है। आगे क्या बताता है? Who has developed unwarranted devotion for the Supreme Personality of God? Vasudeva. On the other hand, a person devoid of devotional service and engaged in material activities has no good qualities, even if he is adept in the practice of mystery yoga or the honest endeavor of maintaining his family, relatives, everything must be driven by his own mental speculation and must engage in the service of the Lord's eternal service. How that can be a good quality in such a person? देखिए, एक व्यक्ति के अंदर विशेष सत्व गुण कैसे रहता है? जब ही हम लोग भगवत सेवा में हमेशा रहता है। भक्ति बोलेगा तो मतलब क्या है? भक्ति सेवन में रहता है। किसका भक्ति में? देवता का, देवी का, भगवान का। भगवान का भक्ति में जो रहता है उनको ही कहते हैं विशेष गुण रहता है। अगर उन्होंने इतना श्रेष्ठ योगी है, इतना श्रेष्ठ गृहस्थ है, अपना पति बच्चों को अच्छा पालन कर रहे हैं, फिर भी उसमें से कुछ होने वाला नहीं है अगर वो भक्ति नहीं करेगा तो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते हैं? आप गृहस्थाश्रम में रहकर भी, हरे कृष्णा, आप लोग गृहस्थाश्रम में रहकर भी भक्ति सेवन कर सकते हैं। You can do devotion service even if you are in the grihasthasrama, you have family, wife, children, everything, still you can do the devotion service. This is what ISKCON propagates. But generally, people understand ISKCON means sannyas. Sannyas nahi hai. We never recommend sannyas because Kali Yuga never allows sannyasam. Clear? So one should take up only devotional service. Serving the Lord, as I told you, there are so many things. You can have a wonderful deity, as this Vanamali has. You can always do the puja, whatever you cook, offer to the Lord, eat it, then it is perfect. Then the life is perfect. This is called devotion service. Hare Krishna. So going back to that. Shloka number 56. Atakala upavrutthe devaki sarva devata putran prasushve chashtau kanyam chaivanu vasaram. Hare Krishna. Maya Mataji, can you read that synonyms? Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Atha, thereafter, Kale, in due course of time, Upavrate, when it was ripe, Devaki, the wife of Vasudeva, Krishna's father, Sarva Devata, Devaki, to whom all the demigods and God himself appeared, Putran, sons, Parasusve, gave birth to Cha and Asto, 8, Kanyam Cha, and one daughter named Subhatra, Eva, indeed, Anu Vatsaram, year after year. Hare Krishna. Hare Krishna. So translation, I request Ratish Prabhu. Ananta. Hare Krishna, Prabhu. Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Each year thereafter, in due course of time, Devaki, the mother of God, and all the demigods gave birth to a child. Thus she bore 8 sons, one after another, and a daughter named Subhadra. हरे कृष्णा. सभी भक्तों याद रखो, कल तक हम लोग बहुत डीप फिलॉसफी बात करता था, आज कथा वापस शुरू हो गया. You can understand very easily. It's going to be a story form. Okay, all be alert. Let us try to understand what happens here. हर साल एक एक बच्चा पैदा होता है क्योंकि कंस ने अपना बहन को नहीं मार डाला. Right? So the mother of God, all the demigods gave birth
to a child. Right? आगे क्या हुआ? Thus she bore 8 sons, one after another, and a daughter named Subhadra. Devaki, the mother of God and all the devatas, gave birth to a child. Okay, so moving on to the purport. The spiritual master is sometimes glorified as Sarva Deva Mayo Guru. क्या बोलता है शास्त्र? क्या कहता है? गुरु को क्या कहता है? वो देवता का समान है. आगे हाँ बोल दिया. हरे कृष्णा. यहाँ उद्धव गीता करके एक विशेष अध्याय है. हरे कृष्णा. कृष्णा अपना कसिन भाई, कसिन ब्रदर, क्या नाम है? उद्धवा. उद्धवा को शिक्षा देता है, उसको कहते हैं उद्धव गीता. ये 11वां स्कंद में भागवत में आता है. वहां भगवान विस्तार से बताता है, अनेक ज्ञान प्रदान करता है. उसमें उसको कहते हैं उद्धव गीता. उसमें एक श्लोक है, आचार्यं मां विजानीयां नवमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्धये असूयेत सर्वदेव मयो गुरुः. Right? So one becomes a devata if they completely respect the guru in such a situation. So because guru is equal to devatas, why we should have a guru? The next question comes, right? Because when you are born as a human being, you have to have a guru. It's a must. Because why? Because we have to understand the human life purpose. क्योंकि हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया तो इसका असली उद्देश्य कैसे मालूम होता है? जैसे गुरु से आध्यात्मिक विषय सीखेगा तो मालूम होता है. क्लियर? हरे कृष्णा. मूविंग ऑन टू द श्लोका प्लीज. Hare Krishna. The spiritual master is sometimes glorified as Sarvadeva Mayo Guru. By the grace of Guru, the spiritual master, one can understand the different kinds of devas. The word deva refers to God, the supreme person of Godhead, who is the origin of all these devatas, who is also called as devas. Right? In Bhagavad Gita 10:2, it says, Aham Adirhi Devanam. भगवान क्या कहता है? अहम आदिर ही देवानाम. सारी देवता का उद्गम कहां से होता है? भगवान श्री कृष्ण से. क्लियर? So one can understand the Supreme Lord is the origin for all this thing. And especially it says, I am the source of all devatas. The Supreme Lord, Vishnu, the original person, expands in different forms. Tat aikshata bahu syam. किसमें बताता? चांडोक्य उपनिषद में बताता. He alone can expand into many. भगवान को विस्तार कर सकते. अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम ब्रह्म संहिता. There are different grades of forms known as shansha, vibhinnansha, anshansha. 3 प्रकार का होता है. So all these things are there. What is that? One is swansha, the next one is anshansha, और दूसरा तीसरा क्या है? vibhinnansha. Swansha means उतना उनका स्वयं expansion है. अंश अंश में उनसे जो अंश होता है उसमें से और एक अंश आता है, उसको कहते हैं अंश. और तीसरा क्या है? विभिन्न अंश मतलब breaking. That's the one is next one. So Swansha expanses are Vishnu Tattva or the supreme person of Godhead, whereas the Vibhinna Ansha are Jiva Tattva. ये थोड़ा सिद्धांत सीख लीजिए. स्वांश means भगवान का विस्तार है. जितना भी विष्णु फॉर्म है उसको कहता है स्वांश. भगवान से ज्यादा भेद नहीं है, समान है. देन अंश अंश बोलेगा तो और उनसे और होता है. जैसे हम देखते हैं ना लीला अवतार, उनको कहते हैं अंश अंश, क्योंकि अंश है उनसे अंश है. राइट? आगे विभिन्न अंश बोलेगा तो उनसे सेपरेटेड, अलग हो गया था. हाँ, विलग हो गया तो उसको क्या कहते हैं? जीवात्मा सब कुछ क्या है? विभिन्न अंश. इसलिए भगवान का जो गुण है हमारे पास भी है, मगर वो संख्या भगवान के पास जितना है वो हमारे पास नहीं. क्लियर? इसलिए भगवान विभु है, हम लोग अणु है. ओके, सो मूविंग ऑन टू दैट. भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः. If we accept the expansions of the Lord, are automatically worship. Okay, sarvaranam achyutejyaha. This is 4:31:14. Right? This is also very important shloka.
I think many of you may by hearted it. Yatha taror moola nishechanena. So this is a very important shloka. अच्छा, ये इसमें आपको समझाता हूँ बहुत आसानी से. आपने एक बीज डाला है, राइट? उसमें से क्या वृक्ष कुछ आ गया. अच्छा, वो वृक्ष आगे पालन पोषण के लिए हम लोग पानी क्या डालेगा? पत्ते में डालेगा, शाख में डालेगा, किधर डालेगा? झाड़ के ऊपर, मूल में डालेगा, राइट? राइट. अभी आपको शरीर को पोषण चाहिए. हाथ थोड़ा वीक हो गया, थोड़ा थकावट आ गया, राइट? हमको हाथ में कुछ थोड़ा खाना डालेगा, नहीं तो आंख में डालेगा, नासी में डालेगा, मुंह में डालेगा, राइट? वो कहाँ पहुंचेगा? पेट में, राइट? यहाँ एक दो उदाहरण दिया है भागवतम में. और तीसरा क्या बताता है? जैसी भगवान को जो भी हम लोग अर्पित करता है, सारी देवता लोग कितना है? आप लोग को मत बताओ, जो आगे बैठा हो कोई भी. देवता लोग कितना है संख्या? हाँ, कौन बताए? हाथ उठा के बोलो. हाँ, ये माता जी हमेशा. अच्छा, आपने बोला था, वेरी गुड. 33 करोड़. कितना है? 33 करोड़. कितना है? अच्छा, हर एक को हम लोग जाके देख सकते क्या? जैसी क्रिक साइड में डालते हैं ना, हाँ, क्या है, कबूतर को डालते ना, ऐसे ही डाल सकते. 33 करोड़ देवता को नहीं हो सकता है. मगर किसको देगा तो सब कुछ प्रसन्न होता है? भगवान विष्णु को, कृष्णा को. इसलिए यहाँ क्या बताते हैं? अच्युत यज्ञ बोलेगा तो अच्युत को देगा तो सारी 33 करोड़ देवता प्रसन्नता होता है. They are satisfied. So one should be intelligent enough to worship Achyuta, who is always taking care of everybody. Right? Hare Krishna. वहाँ पे ट्रांसलेशन क्यों दिखा रहा है? क्या हुआ? हरे कृष्णा. So Krishna is known as Achyuta. Senayor upayor madhye ratam sthapayame Achyuta. Right? By worshipping Achyuta, Krishna, one automatically worships all the devatas. Therefore, no need of separately worshipping either the Vishnu Tattva or Jiva Tattva. If one concentrates upon Krishna, one worships Krishna, everyone. Therefore, because Mother Devaki gave birth to Krishna, he is described as Sarva Devata. Clear? Hare Krishna. अभी थोड़ा समय के लिए कीर्तन का समय हो गया. हम लोग कीर्तन करेंगे. सभी भक्तों से निवेदन है. हरे कृष्णा. वापस एक बार जोर से बोल रहा हूँ. All the devotees, please participate in the kirtan. The kirtan is going to be very simple. Harinama Sankirtan. I'll tell you what are the words in it. You can all repeat after me. Then we'll start the kirtan. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. हरे हरे. अभी हरिनाम संकीर्तन शुरू हो जाएगा. एक भक्त गाएगा, जैसी उन्होंने पूर्ति करते हैं, उसके बाद हम लोग पीछे पीछे गाने का. As he completes, we have to repeat after him. I request all of you, please clap and do it, so that you will get involved. Otherwise, the mind will go somewhere else. Okay? Start. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, All of you start. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna,
अभी सभी भक्तों को दो प्रकार का रिचार्ज हो गया। एक तो उन्होंने जो कषाय दिया था ना, अभी कषाय हम बोलते ना, उसमें से हमको गले सब कुछ हो गया। अभी ये कीर्तन क्या किया, आपको जीवन को एकदम और उत्साह दे दिया। अभी आराम से हम लोग 10-11 तक रुकेंगे ना। हरे जय हरे कृष्ण। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इतना सरल उपाय और कोई बताएगा? हरि नाम का महत्व हर एक भक्त का मुख में अभी देख सकते, इतना प्रसन्नता। क्या कारण है? ये हरि नाम का महत्व और कुछ भी नहीं। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गूस बम्प्स। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज द easiest method. One need not take much efforts at all that joy in the kirtan. See, I'll tell you, the amount of efforts taken by Purvacharyas are something very great, but they have given us very simple things. हमारा कल्याण के लिए उन्होंने इतना प्रयत्न करके बहुत कुछ शास्त्र से निकाल के जो सार है वही दिया है। वो हमको इतना सरल है, इसको हम लोग जोर से स्वीकार। क्लियर? हरे कृष्णा। हरे ओके, हरे कृष्णा। 10वें स्कंद में पहला अध्याय में श्लोका संख्या 57, करेक्ट ना? कीर्तिमंतम प्रथमज्जम, और पेटिशन कंसायान कधुंदविहि अर्पयामास कृच्छ्रेण सनिर्हृतात् अतिविह्वलः okay, अतिविह्वलः। हरे कृष्ण। So moving on to that now. Okay, synonyms. Okay, now I'll give someone who is here to read. Okay, you read word by word, looking at the screen. Kirtimantam. He can see that also. Yeah. Yeah, you look at it. You can? Or you want to give it some? Okay, I'll give it to someone. You read it. Louder, louder. Hare Krishna. The first born baby, Kamshaya unto Kamsa, Anat Dundubihi, Vasudeva, Arpayam Asa, delivered, Krichrena, with the great pain, Saha, he, Vasudeva, Anvritat, from the breaking of the promise, or from fear of being a liar. Ati Vikpalaha was very much disturbed, being afraid. Translation, give it. Vasudeva was very much disturbed by fear of becoming a liar, by breaking his promise. Thus, with great pain, he delivered his first-born son, named Krintiman, into the hands of Kamsa. So, यहाँ क्या किया? जैसे उन्होंने वादा किया है कंस को, अपना पहला पुत्र कीर्तिमान को उनका कंस का हाथ में दे दिया। Purport. In the Vedic system, as soon as a child is born, especially the male child, the father calls for learned brahmanas, and according to the description of the child's horoscope, the child is immediately given a name. This is called Namakarna. There are 10 different samskaras or reformatory methods adopted in the system of Varnashrama Dharma, and the name-giving ceremony is one of them. Although Vasudeva's first son was to be delivered into the hands of Kamsa, the Namakarna ceremony was performed, and thus the child was named as Kirtiman. Kirti bola kya hai? Yashash, famous, right? Kirtiman. Such a name are given immediately after the birth. Hare Krishna. Thoda settle down ho jaiye. So Namakaran वर्ण में अलग अलग समय पे होता है।
ब्राह्मणों को 10वें दिन में, जैसे बच्चा पैदा हो गया तो 10वां दिन में हम लोग क्या करते हैं, नामकरण देते हैं, राइट। उसको बोलते हैं पुण्या का वचन, मतलब शुद्धिकरण, माँ और बच्चों को शुद्धिकरण के लिए पुण्या का वचन होमम भी होता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड फॉर द ब्राह्मण। और क्षत्रिय के लिए कुछ नंबर से मैं अभी याद नहीं रखता है। फिर वैश्य के लिए 16 दिन ऐसा कुछ, 16वां दिन में उनको नामकरण होता है। और द लास्ट वन, द 4th कैटेगरी, इट इज ऑल्सो अगेन 16 days समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ ये तो क्षत्रिय वंश में कौन है, वसुदेव तो क्षत्रिय वंश में, तो हिसाब से करने का था बाद में। मगर अभी समय तो कैसा है, किसको हाथ में देना पड़ेगा, बच्चों को, कंस को हाथ में, मगर उसके पहले ये नामकरण करके दे देते। दैट मीन्स संस्कारास हैज टू बी फुलफिल्ड। अभी इसमें आगे भी एक श्लोक है बहुत विशेष पूर्ण, वो तात्पर्य में प्रभुपाद बताता है वसुदेव को दान देने का था। हरे कृष्णा, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। शास्त्र में लिखा है अगर बच्चा पैदा हो गया तो माता पिता क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। वो दान में सबसे उत्तम दान क्या है, वरदानम बोलते हैं। वरदानम बोलेगा तो जो बीज होता है ना, वो बीज ब्राह्मण को देना चाहिए। याद रखिए, बीज क्या करना चाहिए, ब्राह्मण को। हम लोग चावल बोलते हैं ना, चावल के ऊपर वो आता है ना, उसको क्या बोलता है, पैडी को क्या बोलते हैं, दान, धान्य, वो दान, ओके आई गॉट इट, वी से धान्य, ओके वी से दान। सो धान्य दाना जरूरी है, उसके साथ कुछ लक्ष्मी रखे देते। हरे कृष्णा, ऑल ऑफ यू रिमेंबर इट, व्हेन द मेल चाइल्ड इज बोर्न यू हैव टू गिव द पैडी along with some lakshmi for the brahmanas. धान्य देना जरूरी है with कुछ लक्ष्मी। सो यहाँ पहला बेटा तो ऐसे हो गया, इनको इसमें कुछ नहीं कर सकते। आगे उन्होंने क्या करेगा, जैसी भगवान अवतरित होने के बाद वसुदेव क्या कर रहा है, अपना मन से, अभी आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, वो क्या कर रहा है, अपना मन से अनेक दान दे देता है, गाय और सब कुछ मन से, क्योंकि वो तो कारागृह में, वो कैसे देगा, कुछ नहीं कर सकता। तो वो मन से किया। तो दैट मीन्स वी ऑलवेज हैव द ट्रेडिशन इन आवर सनातन धर्म, गिविंग चैरिटी, इट्स अ ग्रेटेस्ट क्वालिटी, especially for all the 4 varnas, the charity is insisted. भगवद गीता पढ़ेगा तो चारों वर्णों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों को क्या होता है, दान देना जरूरी है। They have to give charity. So वो हिसाब से वसुदेव क्या कर रहे हैं, जैसे कृष्ण अवतरित होने के बाद उन्होंने मन से दान देता है, राइट। मन से दान देने के बाद उन्होंने बोला ही नहीं है। आजकल पॉलिटिकल नेता क्या बोलते हैं, आपको ये देगा वो देगा, बाद में कुछ नहीं देगा। मगर वसुदेव ऐसे आज का नेता नहीं है। So what did he do now? When he come out of the Karagraha, because Krishna and Balram finished the Kansa and they released the parents, कौन, वसुदेव and देवकी. When they came out, ऐसे कारागृह से बाहर निकलने के बाद सबसे पहला कार्य क्या किया, वसुदेव ने जितना उन्होंने मन से दान देने के लिए इच्छुक किया है वो पूरी किया है। क्लियर? अभी क्या होता है, आजकल दान कैसे होता है, मन पहला बोलेगा 1000 दान दे, हम लोग थोड़ा समय देर करेगा तो 500 चलेगा, और कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, 300 चलेगा, फिर ऐसे ही हाथ जेब में डालेगा तो 200 आ जाएगा, उसमें से भी आगे देने के वक्त क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सो इसलिए शास्त्र क्या कहता है, दान देने के लिए कभी भी देर नहीं करना चाहिए, तुरंत, because the mind is like that. This is the mind. It is very, very tough to handle it. So जैसी मन में आता है तुरंत देना चाहिए दान तो. So we have to understand that. No, let it make noise. No problem. Hare Krishna. So we have to understand what is more important here. I was explaining, Vasudeva was giving, that is coming in the later chapters. I have told you in advance because in this it is not mentioned. So such names are given immediately after birth due to the situation. Hare Krishna. Shloka number 58. Hare Krishna. Kim dushaham nu sadhunam vidusham kim apekshitam kim akaryam
कदर्याणाम दुस्यजम किम धृतात्मनाम. Hare Krishna. So I request Radha Kund Prabhu, read the synonyms, translation, everything. श्री प्रभुपाद जी के द्वारा किम क्या दुस्सहम पीड़ाप्रद है, नु निसंदेह साधुनाम साधु पुरुषों के लिए, विदुषाम विद्वान पुरुषों के लिए, किम अपेक्षितम क्या निर्भरता है, किम अकार्यम क्या मना है, तदर्याणाम अधम पुरुषों के लिए, दुस्त्यजम छोड़ पाना अत्यंत कठिन, किम क्या धृत आत्मा नाम स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के लिए. अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा. वे साधु पुरुष जो सत्य पर अटल रहते हैं, उनके लिए क्या पीड़ादायक है. उन शुद्ध भक्तों के लिए जो भगवान को तत्व के रूप में जानते हैं, भला स्वतंत्र क्यों नहीं होती. निम्न चरित्र वाले पुरुषों के लिए कौन सा कार्य वर्जित है. जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया है, वे कृष्ण के लिए भला कौन सी वस्तु नहीं त्याग सकते. तात्पर्य श्री प्रभुपाद. यहाँ एक भक्त का नाम है देवकी, उनको दे दो, उन्होंने पढ़ने दो आगे. देवकी देवी दासी. हरे कृष्णा. हाँ, तात्पर्य पढ़िए माँ. क्योंकि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा कंस का वध होना था, अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि वसुदेव को पहले पुत्र को ले जाकर देने की क्या आवश्यकता थी. इसका उत्तर यह है कि वसुदेव ने कंस को वचन दिया था कि वह देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों को लेकर सौंप देगा. असुर होने के कारण कंस को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि 8वीं संतान ही उसका वध करेगी. उसने यह मान लिया था कि वह देवकी के किसी भी संतान के द्वारा मारा जा सकता है. इसलिए देवकी को बचाने के लिए वसुदेव ने कंस को हर संतान, चाहे वह लड़का हो या लड़की, देने का वचन दिया था. दूसरी दृष्टि से वसुदेव तथा देवकी दोनों परम प्रसन्न थे कि भगवान कृष्ण 8वें पुत्र के रूप में उनके यहाँ उत्पन्न होंगे. भगवान का शुद्ध भक्त होने से वसुदेव कृष्ण को देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न होते देखने के लिए ललायित थे. इसलिए वे सारी संतानों को तुरंत सौंपना चाहते थे कि जिससे 8वीं संतान की बारी आए और कृष्ण प्रकट हों. इसलिए प्रति वर्ष वे एक संतान उत्पन्न करते रहे, जिससे कृष्ण यथासंभव शीघ्र ही उत्पन्न हो. जय हरे कृष्णा. ये तात्पर्य का मतलब बताता हूँ. प्रभुपाद के अलावा और कोई ऐसी तात्पर्य लिखने वाला नहीं, सच कर. क्योंकि हम लोग श्लोक पढ़ सकते हैं, श्लोक का अर्थ तो बिल्कुल मालूम नहीं होता है, मगर अनुवाद में उसमें जितना समझ सकते कोशिश कर रहे हैं. मगर जैसे तात्पर्य पढ़ने के बाद उसका असली अनुभव होता है. क्योंकि प्रभुपाद जितना तात्पर्य लिखा है, हर एक तात्पर्य में अपना पूरा अनुभव उसमें डाल. That's why when we read it, we can easily understand. I'll tell you, when we read this shloka, we can understand to some extent. But when we listen to the purport, automatically we can understand how Vasudeva was feeling. That is expressed in the purport. तात्पर्य में वसुदेव का मन में जो था, उन्होंने यहाँ प्रभुपाद समझाता है. ये कैसे होता है? शुद्ध भक्ति को ही होता है, किसी को नहीं होता. इसलिए प्रभुपाद को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रील प्रभुपाद की हम आवाज है. Hare Krishna. I'll tell you, it is not an easy thing. When we remember Prabhupada, we have to shed tears. इतना उन्होंने सेवा की, जन समाज के लिए बहुत कुछ किया. Not one, so many. क्योंकि इतना जीव, इतना बद्धात्मा को उन्होंने उद्धार किया है, you cannot imagine. इसलिए कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं प्रभुपाद को? शक्ति आवेश अवतार. भगवान उनका अंदर शक्ति प्रदान किया है, इसलिए उनको इतना समझा सकते. इमेजिन, हमको तो कम से कम थोड़ा सा सुकृति है क्योंकि हम लोग भारत में जन्म लिया है. भारत भूमि लो मनुष्य जन्म. हाँ,
परोपकार। कौन सा उम्र में उन्होंने परोपकार किया? एट द एज ऑफ 69। कब तक? 77 तक। आज का लोगों ने ऐसी इसी चार में देख के टीवी, मोबाइल, मैं सच कह रहा हूं बहुत जगह पे ऐसे चल रहा है। दे डू नॉट नो हाउ टू यूटिलाइज द रिटायर्ड लाइफ। प्रभुपाद क्या किया? सारी समाज के लिए उन्होंने दिया। समथिंग वेरी स्पेशल, very special. We cannot glorify him. It is impossible to glorify him because he has done so much to humanity. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Okay, moving on to this. अभी देखिए यहाँ वसुदेव ने क्या सोचा था? मैंने उनको वचन दे दिया, राइट? वो वचन को हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन्होंने मार डालेगा। मगर वसुदेव और देवकी को मन में क्या इच्छा है, क्या प्रार्थना है शुरू से? भगवान कृष्ण को। So that is the reason they are ready to forgo everything. इसलिए हम लोग भी क्या करना चाहिए? अगर भगवान चाहिए तो हम लोग बहुत कुछ क्या करना पड़ेगा, राइट? अभी हम लोग जाके श्रीनाथ जी हवेली में दर्शन करते हैं, राइट? दर्शन करके करके क्या करते हैं? जैसी सुपर मार्केट जाएगा तो एक लिस्ट बनाता ना, वैसे है। उसमें एक 2 बेडरूम फ्लैट चाहिए, एक नया गाड़ी चाहिए और क्या क्या चाहिए उसमें, वो लिस्ट में मोबाइल भी आता है आजकल। Try to understand what we want. We want the Lord himself, not the petty things. इसलिए एक श्री वैष्णव संप्रदाय में एक आचार्य समझाता था, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक व्यक्ति गया था कहाँ? बालाजी के पास, तिरुमला तिरुपति। भगवान से उन्होंने प्रार्थना करते रहते अनेक लॉन्ग लिस्ट बना दिया। भगवान तथास्तु तथास्तु बोल दिया। वो प्रसन्नता मुख से निकल रहा है, फिर भगवान मुस्कुराता है। वो देखे ये भक्त क्या हो, भगवान मुस्कुराता है। वापस आके भगवान से पूछ रहे, मैं तो इतना प्रसन्न हो गया, आप क्यों प्रसन्न हो गया, आप क्यों मुस्कुराता है? फिर भगवान कहते हैं, ये वत्सल अभी देखो आपने सब कुछ पूछ लिया मगर मेरे को छोड़ दिया, मैं आने का तैयार था। हम इतना बुद्धू है, याद रखो हम लोग एकदम बेस्ट बुद्धू है। So we have to ask for the Lord, not for petty things. Hare Krishna. Okay, so purport थोड़ा आगे जाओ तो। Since the 8th son, okay, that you have understood. I think so. I have covered the purport. No, anything left out? Vasudeva was a pure devotee of the Lord, was eager to see Krishna. देखिए वसुदेव और देवकी दोनों सहनताशील में टॉप क्लास है, टॉलरेंस। हरे कृष्णा, ये ध्यान पूर्वक सुनिए। वसुदेव तो आसानी से दे सकते हैं, बच्चा पैदा हो गया आसानी से दे सकते हैं, उनका मन में भी कुछ संकट होगा, मगर देवकी को इतना आसान नहीं है। क्यों बताओ? माता जी लोग क्या ये उत्तर देने गए, प्रभु लोग कुछ नहीं देना। माता जी लोग क्यों देवकी के मन में देने के लिए क्या होएगा? क्विक, इतना समय नहीं। हाँ, अच्छा, ये देवकी क्या बता रही है सुनेंगे, वो देवकी को कुछ बता रहे, आप देवकी। ममता, right? True or not? Because it's not easy bearing 9 months a child in the womb. अभी इसके बारे में बोलेंगे तो बहुत कुछ बोलने के लिए है, मगर अभी थोड़ा संक्षिप्त रूप में बताता हूं, क्योंकि हर एक so every son has got a duty to his parents. It cannot be changed at any time. What Shastra says very clearly, they have to go to first Rameshwaram, then they have to go to Prayagraj, then they have to go to Banaras, then they have to go to Vishnu Gaya. कितने लोग इसके बारे में सुन चुका है? इसके बारे में पहले हाथ उठाइए।
शास्त्र यही कहता है। 4 जगह, पहला रामेश्वरम, प्रयागराज, बनारस और चौथा विष्णु गया, ये बिहार में है। देखिए हम लोग विष्णु गया होगा तो वहां जाने के बाद माता पिता के लिए हम लोग ये क्या करते हैं, श्राद्ध, पिंडदान। पिंडदान में पिता को सिर्फ 6 ही है। कितना है? 6 ही पिंड है, मगर माता के लिए कितना है? 18। कितना? 18 पिंड है। हर एक मंत्र में सुनेगा तो कोई भी इतना मूर्ख बेटा भी रोएगा, आंखों से आंसू नहीं निकलेगा, रक्त निकलेगा, क्योंकि माँ ने इतना त्याग करके एक बच्चों को पैदा, क्योंकि उनको रुचि है अचार खाने के लिए। ओ मेरा बेटा को टिकने लगेगा, मैं नहीं खाऊंगा, राइट। उन्होंने इतना उनको धक्का मारता है, he is giving kicks also, right? वो टॉलरेट करती, it's not an easy thing. So this is what Devaki could not tolerate it, but Vasudeva can tolerate it, right? हरे कृष्णा। ये माता जी लोग और एक बार जय बोलो। हरे जय। Okay, let's move on to that. What does it say? Therefore, he wanted to deliver all the children quickly so that the 8th turn would come and Krishna would appear. He begot one child every year so that Krishna turn would appear, come soon as possible. Right? भगवान आने के लिए उन्होंने इतना इंतजार कर रहा है, इतना इच्छुक रहता है, राइट। हम लोग भगवत सेवा करने के लिए कल करेंगे, आज थोड़ा थकावट, ऐसे बोलते नहीं। भगवत सेवा बोलेगा तो तुरंत आना चाहिए, शरीर को देखना नहीं चाहिए। सेवा सबसे प्रथम है। ये देखो प्रतीक हंस रहा है, राइट? ट्रू और नॉट? अरे श्लोक संख्या 59। दृष्ट्वा समत्वं तच्चौरेः सत्य चैव व्यवस्थितिं कुंसस्तुष्ट मनाराजन् प्रहसन्निधम् अब्रवीत्। ओके प्रभु आप पढ़ लो, हिंदी में चाहिए आपको? इंग्लिश ओके चलेगा। हाँ प्रभु शो इट ना। By seeing Samatvam mind equipoised and disturbing distress of happiness, that salvation of Vasudeva, Sakhi in truthfulness, indeed, Iva certainly, Bhāgavata, the flown situation, Kamsa, that's Samana, being very satisfied. Being very satisfied with Vasudeva's behavior in delivering the first child to keep his promise. Rajan, O Maharaja Parikshit, Prahasan, with a smiling face, Idam, this Abravit said. Hare Krishna. Thank you. Okay, translation. I request Geeta Krishnan Mataji to read it. Geeta Krishnan Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Read the translation, please. Hare Krishna. Yeah. Translation. Srila Prabhupada ki jai. My dear King Parikshit, when Kamsa saw that Vasudeva being situated in truthfulness, was completely equipoised in giving him the child, he was very happy. Therefore, with a smiling face, he spoke as follows. Hare Krishna. Hare Krishna. Purport. Lakshmi Mataji. Hare Krishna. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The word Samatvam is very significant in this verse. Samatvam refers to one who is always equipoised, unaffected by either happiness or distress. Vasudeva was so steadily equipoised that he did not seem in the last agitated when delivering his firstborn child into the hands of Kamsa to be killed. In Bhagavad Gita 2.56, it is said, Dukkeshu anuvignamanaha, sukeshu vigadaspraha. In this material world, one should not be very eager to be happy, nor
should not be very much disturbed by material distress. Lord Krishna advised Arjuna, Matra sparshasu kaunteya sitoshna sukha dukkadaha agamapayino nityaha titikshasva bharata. O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O scion of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. Bhagavad Gita 2.14. The self-realized soul is never disturbed by so-called distress or happiness, and this is especially true of an exalted devotee like Vasudeva, who showed this by his practical example. Vasudeva was not at all disturbed when delivering his first child to Kamsa to be killed. Hare Krishna, thank you for the seva. हरे कृष्णा। ये अनुवाद से मालूम होता है जैसी वो देवकी बता रही थी ना, ममता मेरा बेटा, राइट। यहाँ वसुदेव को ये नहीं था, क्या कारण है? उन्होंने समत्वम, समशीला भजन्ति वाई, एक श्लोक में आता है। समशीला भजन्ति मतलब समान रहना है, स्थित प्रज्ञ। So this is very important. So Vasudeva was though able to give the first child. Imagine that giving the first child is not that easy, but he gave it. And what was the situation? He was equipoised. मगर देवकी को तो दर्द होता है. It's bound to happen. Okay, so moving on to the next shloka. Pratiyathu kumaro ayam nahi asmat asti me bhayam ashta mat युवयोर गर्भान मृत्युर में विहितः किलः किला. Okay, so moving on to that, next I am requesting प्रभु हिंदी में डाल दीजिए. बालकृष्णा पढ़ लो. बालकृष्णा किधर है? हरे कृष्णा प्रभु जी. हिंदी पढ़ो पढ़ो. हाँ, शब्दार्थ. प्रतियातु, हे वसुदेव, अपने बच्चे को घर ले जाओ. कुमारः, नवजात शिशु. अयम, यह. न, नहीं. ही, निसंदेह. अस्मात्, उससे. अस्ति, है. में, मेरा. भयम, भय. अष्टमात्, आठवें से. युवयोः, तुम पति पत्नी दोनों के. गर्भात, गर्भ से. मृत्यु, मृत्यु में. मेरा. विहित, जो होना है. किल, निसंदेह. धन्यवाद भाई श्रभुपाद. जय श्रभुपाद. हे वसुदेव, तुम अपने बच्चे को वापस ले सकते हो और घर जा सकते हो. मुझे तो तुम्हारी और देवकी की 8वीं संतान से चिंतित हूँ, जिसके हाथों मेरी मृत्यु लिखी है. हरे कृष्णा. हम लोग पहाड़ पहाड़ बोलते हैं, पत्थर पत्थर बोलते हैं. पत्थर के अंदर भी थोड़ा गीला होता है, मालूम है? सुना हुआ है? सुना हुआ नहीं सुना हुआ है? ऐसी ये इनका हृदय क्या है? पत्थर से बना हुआ. किसका हृदय? मगर उसका अंदर भी थोड़ा सा गीला होता है, राइट. मतलब इनका अंदर भी कुछ अच्छी गुण दिख सकते हैं. So that means nobody is bad, nobody is good. All that makes because of the circumstances. Clear? So उन्होंने क्या बता रहे? आप ले जाओ ये पुत्र को, क्योंकि उनको मालूम है 8वां गर्भ है, इसलिए ये कुछ नहीं करने वाला है. अभी देखिए, जो पहला वसुदेव ने जो प्लान भी किया है एकदम सक्सेसफुल हो गया. देखो, राइट. एक एक करके. मगर उसको और चेंज करने वाला आगे कौन है? नारद जी इंतजार. आगे देखिएगा. वंडरफुल. श्लोका नंबर. अत्यति सुतम आदाय यायौ आनक धुंदिभिः नभ्यानन्दत तद्वाक्यम असतो अविजितात्मनः. हरे कृष्णा. तो ये पढ़ने के लिए मैं बुलाता हूं राधा कृष्ण गौरदास. सिनोनिम ट्रांसलेशन. हरे कृष्ण प्रभु. धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्णा. सिनोनिम्स. तथा. हिंदी चाहिए?
വേണ്ട പ്രഭു എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല വായിക്കാറില്ല. Tada, very well. Iti, thus, Sutam Adaya, taking back his child. Yayo left that place. Anagatuntubihi, Vasudeva. Na Abhyanandata, did not very much value. Nandata, Abhyanandata. Okay, Na Abhyanandata, did not very much value. Tat Vakyam, the words of Kamsa. Asatha, who was without character. Avijita Atmanaha, and without self-control. Translation by Swami Srila Prabhupada ki Jai Srila Prabhupada. Vasudeva agreed and took his child back home, but because Kamsa had no character and no self-control, Vasudeva knew that he could not rely on Kamsa's word. Hare Krishna. Hare Krishna. ये शुद्ध भक्त है, ये असुर का स्वभाव कभी बदले उतना मालूम नहीं है. ये जगह को क्या बोलते हैं मालूम है? नीचे देश. कोई सुना हुआ है? भारत देश में जो रहता है, ये मिडिल ईस्ट को क्या बोलेगा? नीचे देश बोल. इनका स्वभाव कैसे बदले होता पता नहीं. आपको मालूम है ना? अरबाब बोल के कभी भी हमको फेंक देगा, कभी भी मार डालेगा. So we have to be very careful. So यहाँ आसुरिक स्वभाव ऐसे होता है, right? So यहाँ इसलिए वसुदेव को थोड़ा सा शंका है, ये इतना बता दिया कैसे हो सकता है? मेरे को विश्वास नहीं है. हरे कृष्णा. श्लोका 62-63. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. नंदाध्याये व्रजगोप याश्चामिषां च योषितः वृष्णयो वसुदेवाध्या देवक्याध्या यदु स्त्रियः सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बंधु सुहृदो ये चे कंसम अनुव्रताः. हरे कृष्णा. मालिनी माता जी, इंग्लिश चाहिए हिंदी चाहिए? English is okay, Prabhu. Hare Krishna. Okay. So now, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Nanda Adya, beginning from Nanda Maharaj. Ye, all of which persons? Vraje, in Vrindavana. Gopaha, the cowherd men. Ya, which? Cha, and. Amisham, of all those inhabitants of Vrindavana. Cha, as well as. Yoshita, the woman. Vrishnayah, members of the Vrishni family. Vasudeva Adyaha, headed by Vasudeva. Devaki Adyaha, headed by Devaki. Yadu Striyaha, all the women of the Yadu dynasty. Sarve, all of them. Vai, indeed. Devata Prayaha were inhabitants of heaven. Ubhayoho, of both Nanda Maharaj and Vasudeva. Api, indeed. Bharata, O Maharaj Parikshit. Nyatayaha, the relatives. Bandhu, friends. Suhridaha, well-wishers. Ye, all of whom. Cha, and. Kamsam Anuvrataha, even though apparently followers of Kamsa. Translation. Jai Srila Prabhupada. The inhabitants of Vrindavana, headed by Nanda Maharaj and including his associate cowherd men and their wives, were none but denizens of the heavenly planets, O Maharaj Parikshit, best of the descendants of Bharata. And so too were the descendants of Vrishni dynasty, headed by Vasudeva and Devaki, and the other women of the dynasty of Yadu. The friends, relatives, and well-wishers of both Nand Maharaj and Vasudeva, and even those who externally appeared to be followers of Kamsa, were all demigods. Purport, should I read, Prabhu? Wait. Vidya Mataji. Okay. Vidya Mataji, quick. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. As previously discussed, the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, informed Lord Brahma that Lord Krishna would personally descend to mitigate the sufferings on the earth. The Lord ordered all the denizens of the heavenly planets to take birth in different families of the Yadu and Vrishni dynasties and in Vrindavana.
Now, this verse informs us that all the family and friends of the Yadu dynasty, the Vrishni dynasty, Nanda Maharaj and the Gopas descended from the heavenly planets to see the pastimes of the Lord. As confirmed in Bhagavad Gita 4.8, the Lord's pastimes consist of Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chadushkrutam, saving the devotees and killing the demons. To demonstrate these activities, the Lord called for devotees from different parts of the universe. There are many devotees who are elevated to the higher planetary system. Mataji, Prapya Punya. Mataji, 1 minute. I will give it to another devotee. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Simi Mataji, start from there. There are many devotees. Hare Krishna, Prabhu. There are many devotees who are elevated to the higher planetary system. Prapya Punya Kridam Lokan Ushtiva Shashwada Samaha Shujinam Srimadam Gehe Yoga Brishto Abhijayate. The unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. Bhagavad Gita 6.41. Some devotees, having failed to complete the process of devotional service, are promoted to the heavenly planets to which the pious are elevated, and after enjoying there, they may be directly promoted to the place where the Lord's pastime are going on. When Lord Krishna was to appear, the denizens of the heavenly planets were invited to see the pastimes of the Lord, and thus it is stated here that the members of the Yadu and Vrishni dynasties and the inhabitants of the Vrindavana were demigods or almost as good as demigods. Even those who extremely helped the activities of Kamsa belong to the higher planetary systems. The imprisonment and release of Vasudeva and the killing of various demons were all manifestations of the pastime of the Lord, and because the devotees would be pleased to see these activities personally, they were all invited to take birth as friends and relatives of these families. As confirmed in the prayers of Kundi, Bhāgavatam 1.8.19, Nato Natya Taro Yata. The Lord was to play the part of a demon killer and a friend, son, and brother to his devotees. Hare Krishna. And thus these devotees were all summoned. Hare Krishna. Hare Krishna. So we can understand, जैसी ब्रह्मा जी और शिव जी और भूमि माता और देवता जाके इसको कंप्लेन दिया है भगवान विष्णु को, राइट? भगवान विष्णु क्या बताया, जैसी मेरे साथ जो पार्षद है गोलोक में वैकुंठ में, वो लोग जाके कहाँ अवतार होएगा, पूरा वृंदावन में, क्योंकि भगवान लीला वहां करने वाला है, सबको बता दिया वहां जाइए। तो इसलिए सब लोग वहां जाने के बाद भगवान अवतरित होने वाला है, ये श्लोक अंदर ही समझाता है। सो जैसे हम लोग भगवान का विषय में देखेगा तो प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, जैसी भक्ति में थोड़ा सा सेवा करेगा तो वो उसका नुकसान नहीं होता है। नेहा विक्रमणा सोस्ति बताता है। सो भक्ति सेवन में आपको कभी भी नुकसान नहीं है, थोड़ा सा सेवा करेगा तो भी आगे क्या होता है, एक सुचि नाम श्रीमताम गेहे, एक विशिष्ट धनी का घर पे होता है, नहीं तो एक ब्राह्मण का घर पे होता है। So one should understand this is the importance of it, and especially when the Lord comes down, he never comes alone, he comes with all the parshada. जैसे चैतन्य महाप्रभु आया, उनके साथ पार्षद भी आया। कौन सा श्लोक है? कृष्ण वर्णम तुषार हरे कृष्ण, थैंक यू। तो यहाँ भगवान आते वक्त उनके साथ पार्षद कौन है? पूरा वैकुंठवासी। उनको क्या कहते हैं? श्री वैष्णव संप्रदाय में बोलेगा उन लोगों को आழ்वार नहीं है ये अलग नाम है, नित्य शूरी। क्या बताता है? श्री वैष्णव संप्रदाय में क्या बताता है? उनको नित्य शूरी बोलते हैं। भगवान के साथ हमेशा पार्षद है, राइट? सो दिस इज द वे द लॉर्ड अपीयर्स। सो वी कैन अंडरस्टैंड here the Lord is going to appear. Before that all the arrangements have been done. Okay, moving on to the next shloka. Yetat kamsaya bhagavan shasam
सा एत्य नारदः भूमेर भारायमानानां दैत्यानां च वधोद्यमम्. Okay. Okay. Umapati, can you read this quickly? Read louder. Hare Krishna, synonymous. All these words about the Yadu family and Vishnu family. Kamsaya, unto the Kamsa, Bhagavan, the most powerful representative of the Supreme Personality of Godhead. Prasamsa, informed Kamsa, who was in doubt. Abhyetya, after approaching him. Narada, the great sage Narada. Bhumi, on the surface of the earth. Bharayamananam, of those who were a burden. Daityanam, cha, and of the demons. Vadha Uttayamam, the endeavor to kill. Translation. 1 minute, I will give it to Anirudh. Read that. Yeah, louder. Translation. Once the great sage Narada approached Kamsa and informed him of how the demoniac persons who were a great burden on the earth were going to be killed. Thus Kamsa was placed into great fear and doubt. Read that purport also. The purport is longer or short? No? Give it. Purport. Hare Krishna. Okay. Subhash, you do it. You didn't do anything. Purport by Srila Prabhupada. It has already been discussed that Mother Earth implored Lord Brahma to give him relief from the distress created by the burdensome demons, and that Lord Brahma informed her that Lord Krishna himself was going to appear. Krishna was in Bhagavad Gita 4.8, Paritranaya sadhunam vinashaya dushkuram dharma samstavanathraya sambhavami yuge. Whenever there is a burden created by the demons and whenever the innocent devotees are distressed by demoniac rulers, the Lord appears in due course of time to kill the demons with the assistance of his real representatives, who are technically called demigods. In the Upanishads, it is stated that the demigods are different parts of the Supreme Personality of Godhead. As it is the duty of the parts of the body to serve the world, it is the duty of Krishna's devotees to serve Krishna as he wants. Krishna's business is to kill the demons, and therefore this should be devotees' business also. Because the people of Kali Yuga are fallen, however, Sri Chaitanya Mahaprabhu, out of kindness for them, did not bring any weapon to kill them. Rather, by spreading Krishna consciousness, love of Krishna, he wanted to kill their nefarious demoniac activities. This is the purpose of Krishna consciousness movement. Unless the demoniac activities on the surface of the world are diminished or vanished, no one can be happy. The program for the conditioned soul is fully described in Bhagavad Gita, and one simply has to follow these instructions to become happy. Sri Chaitanya Mahaprabhu has therefore described Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Eva Kevalam. Let people chant the Hare Krishna mantra constantly. Then their demoniac tendencies will be killed and they will become first class devotees, happy in this life and in the next. Hare Krishna. इस श्लोक में क्या बता रहे? भगवान श्री कृष्ण ने भूमि का भार कम करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य, तो उन्होंने क्या किया? सारे असुरों को वध करके अपना भक्त को सुरक्षा दिया है। मगर चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतार किया है, उन्होंने क्या किया? किसी को वध नहीं किया है। उन्होंने क्या बताया? सभी भक्तों को ये हरिनाम का महत्व समझा के वो हरिनाम स्वीकार करो, इसमें से उद्धार हो जाएगा कलयुग का दोष से। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक 65-66। ऋषेर विनिर्गमे कंसो यदुन्मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भ संभूतम विष्णुम च स्वभदम प्रति देवकीं वसुदेवं च निग्रह्य निगड्ढैर् गृहे जातं जातं अहं पुत्रं तयोर अजन शंकया. Okay, go to the truth. Okay. Aniruddha, avarthu konja pinnadi ningal back la avar perana. Girish, give it. Girish, you read the word by word quickly. The shade of the great sage Narada, Minigrame on the departure after giving information, Kamsa,
Yadun, all the members of the Yadu dynasty, Matwa, thinking of Turan as demigods, Iti, thus Devakya of Devaki, Garbha Sambutham, the children born from the womb, Vishnu, accepting as Vishnu, Cha and Swavadham Prati, fearing his own death from Vishnu, Devakim, Devaki, Vasudevam Cha and her husband, Vasudeva, Nirghya, arresting Nigadhai by iron shackles, Grihe, confined at home, Jhatam, Jhatam, each one who was born, one after another, Ahan, killed Putram, the sons, Tayo of Vasudeva and Devaki, Achana Sankhya, with the doubt that they would be Vishnu. Give it back. Give it back. Mataji or Prabhuji, one of you. I am giving it to you only. Prabhu, you do it. Translation. After the departure of the great saint Narendra, Narada, Kamsa told that all the members of the Hindu dynasty were demigods and that any of the children born from the womb of Devaki might be Vishnu. Fearing his death, Kamsa arrested Vasudeva and Devaki. Vasudeva. And Devaki and chained them with iron shackles. Suspecting each of the children to be Vishnu, Kamsa killed them one after another because of the prophecy that Vishnu would kill him. Okay. Vigneshri, can you read the purport quick? Srila Jiva Goswami in his notes on this verse has mentioned how Narada Muni gave Kamsa this information. This incident is described in the Harivamsa. Narada Muni went to see Kamsa by providence, and Kamsa received him very well. Narada therefore informed him that any one of the sons of Devaki might be Vishnu. Because Vishnu was to kill him, Kamsa should not spare any of Devaki's children. Narada Muni advised. Narada's intention was that Kamsa, by killing the children, would increase its sinful activities so that Krishna would soon appear to kill him. Upon receiving the instructions of Narada Muni, Kamsa killed all the children of Devaki one after another. The word Ajana Sankhya indicates that Lord Vishnu never takes birth, Ajana, and that he therefore appeared as Krishna, taking birth just like a human being. Manushin Tanam Ashritam. Kamsa attempted to kill all the babies born of Devaki and Vasudeva, although he knew that if Vishnu were born, he would not be killed. Actually, it came to pass that when Vishnu appeared as Krishna, Kamsa could not kill him. Rather, as foretold, it was he who killed Kamsa. One should know in truth how Krishna, who takes his birth transcendentally, acts to kill the demons, but is never killed. When one perfectly understands Krishna in this way, through the medium of Shastra, one becomes immortal, as the Lord says in Bhagavad Gita, Janma karma pune divyam, evam nirviti tattataha, yatta devam punarjanma, naiti man yeti suvartana. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. So we can understand, यहाँ कैसे बता रहे भगवान का जो योजना है वो अलग है। इसलिए क्या किया, नारद मुनि को भेजा है। नारद मुनि क्या बता रहे, अब इसमें विश्वास ना करो, उसमें कोई भी विष्णु होगा। फिर इनको शंका बढ़ गया, कौन, कंस को। उन्होंने क्या किया, शुरुआत से सबको मारना शुरू हो गया। सो ही इज सैटिस्फाइड। मगर इसमें याद रखिए, वसुदेव और देवकी इसके लिए भी सहनशील है। उन्होंने वापस किया, उसी वक्त भी उन्होंने ज्यादा विचलित नहीं हुआ। ओ अच्छा, इन्होंने वापस दिया करके उनको मालूम है इनका स्वभाव कैसा होता है। इसलिए हम लोग कुछ श्लोक में देखा था, वसुदेव वो आश्चर्यचकित देख रहा है, ये असुर कैसे वापस दे दिया उसको। मगर नारद आके उनको लीला की, मरीचि करके है, उन लोगों को ये श्राप था, ये 6 पुत्र, इसलिए वो लोग मर जाता है। किसके द्वारा, कंस के द्वारा। ठीक है। So moving on to the next shloka.
मातरम पितरम भातन सर्वांश्च सुहृदं तथा ग्नन्ति हि असु तृपो लुब्धा नाजानः प्रायश्चो भुवि. Okay, this one. Synonyms. Mataram unto the mother, pitaram unto the father, bhratrana unto the brothers, sarvancha anyone else, suhurdaha friends, tata as well as nanti, gnanti. They kill as they practically seen. He indeed asutupta, those who envy the lives of others for their personal sense gratification. Luptaha, greedy. Raja naha, such kings. Pra yashaha, almost always bhuvi on the earth. Translation. King greedily for sense gratification on the earth almost kill always their enemies indiscriminately. To satisfy their own whims, they may kill anyone, even their mothers, fathers, brothers or friends. आजकल हम लोग देख सकते हैं ये भूमि में बहुत कुछ होता है, अपना भाई को भी पापा को भी मार डालता है, राइट. हम लोग देखा था आज रामायण में असुर रावण को भी ऐसे ही है, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना भाई को भी त्याग करने के लिए तैयार है, पुत्र को भी त्याग करने के लिए तैयार. मगर राम जी कैसे था, उन्होंने अपना प्रजा सबको सुरक्षा देने वाले में इच्छुक है. यही फर्क है, एक आसुरिक स्वभाव और दैविक स्वभाव. So आगे देखें तो परपोर्ट में देखेंगे. Purport. We have seen in the history in India, Aurangzeb killed his brother, nephews, and imprisoned his father to fulfill his political ambitions. They have been very similar instances, and Kamsa was the same type of king. Kamsa did not hesitate to kill his nephews and imprison his sister and father. क्या क्या उन दोनों को कारागृह में डाल दिया. For demons do such things is not astonishing. Nonetheless, although Kamsa was a demon, he was aware that Lord Vishnu cannot be killed, and thus he attained salvation. उनको मालूम होगा क्या है, भगवान विष्णु को मार नहीं सकते, राइट. इसलिए उनको क्या प्राप्त हुआ, अंत में मुक्ति प्राप्त किया है. Even partial understanding of the Lord's activity makes one eligible. क्या बताया पहला श्लोक में, जन्म कर्म चमे दिव्याम. जैसे जिनको मालूम होता है भगवान दिव्य है, वो हमेशा शाश्वत है, राइट. ऐसी कोई भी थोड़ा सा मालूम हो गया तो भगवान उनको क्या दे देते हैं, मुक्ति प्राप्त प्रदान करते हैं, राइट. So and therefore attain salvation through the thought of Vishnu, Krishna as an enemy. What then to be said of one who knows Krishna perfectly from the description of the Shastras like the Bhagavad Gita? It is therefore the duty of everyone to read Bhagavad Gita and understand Krishna perfectly. This will make one's life successful. Hare Krishna. Next, Prabhu. Atmanamiha sanyatham jananne prag Vishnuna hatam mahasuram kala nemimim. क्योंकि कंस का पहला जन्म क्या था, कालनेमी. ओके, कालनेमिम यदुभिहि स यो या रुध्यता. ओके, synonyms. Atmanam, personally, iha, in this world, sanyatam, born again, janan, understanding well, prak, previously, before that, birth, Vishnuna, by the Lord Vishnu, hatam, killed, mahasuram, the demon, kalanimim, by the name of Kalanemi, Yadubihi, with the members of the Yadu dynasty, Saha, he, Kamsa, Vyarudhyata, acted inimically. Okay, Keshav Bharati, can you read that translation purport? In his previous birth, Kamsa had been a great demon named Kalanemi and been killed by Vishnu. Upon hearing this information from Narada, Kamsa became envious of everyone connected with the Yadu dynasty. Persons who are demons, enemies of the Supreme Personality of Godhead, are called Asuras. As stated in the Bhagavad Gita, the Asuras, because of their enmity toward the Supreme Personality of Godhead, take birth after birth in Asura families and therefore glide down to the darkest foolish regions. तो नारदा से सुनकर क्या हुआ, कंस को अभी मालूम हो गया, सबको मार डालो. ठीक, आसुरी स्वभाव और बढ़ता है क्योंकि नारदा के उसको क्या किया, डाला.
Agni ko har chabodara, right? Okay. Text 69. Ugrasenam cha pitaram yadu bhojanantaka divyam swayam nigraya ubuje surasenan mahabala. Okay. Subhash. Ugrasenam and the Ugrasena Cha and Pitaram was his own father, Yadu or the Yadu dynasty, Bhoja from the Bhoja dynasty, Andala or the Andala dynasty, Atipam, the king, Swayam personally, Nigrahya, subduing, Ubuje, injured, Surasena and all the states known as Surasena, Mahabala, the extremely powerful Kamsa, translation. Kamsa, the most powerful son of Ugrasena, even interesting his own father, the king of the Yadu, Bhoja and the Andhra dynasties, and personally ruled the states known as Surasena. Hare Krishna, purport. The state known as Mathura was also included with the states known as Surasena. Additional notes for this chapter, Prabhu. Very lengthy, yeah? Very lengthy, yeah? Okay, what we will do, we'll take it up for tomorrow. With this, Adhyaya is completed, right? Right? Hare Krishna. समय की वजह से जो notes है कल हम लोग पढ़ेंगे. In any case, technically we have completed the chapter 1 of the 10th canto. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की. नमस्ते नरसिम्हा गाँव. Sorry, bro. Namaste Narasimha. Namaste
जी का यजमान हिज ग्रेस वनमाली, निमाय प्रभु और सुष्मिता गौरांगी माता जी, भक्त सिद्धार्थ, भक्तिन वेदिका, ये पूरी फैमिली के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इसके अलावा हमारा प्रिय राधा कुंड प्रभु एंड फैमिली, वी ऑल्सो request all of you to pray for that family also. This is very important. Let's all chant twice. Before that, we all have to progress in Krishna Bhakti. So, हम लोगों को भी ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे सब मिलकर। आर लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। 2 बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा कीजिए, आज थोड़ा लंबा कर दिया आज का क्लास। 8:15 को हमेशा पूर्ति होने वाला है। कल तो सबको ऑफिस भागना पड़ेगा, बच्चों को स्कूल भी भागना पड़ेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हाँ, कल का भागवतम मधुहर प्रभु और अपराजिता माता जी और भक्त मोक्ष और केशव, इनका घर पे होगा। ये तो मंकूल में अलायंस सेंटर के पीछे, और बिल्डिंग का नाम है अल हाई बर्दुए में। सभी भक्तों से निवेदन है, कल का भागवत पाठ 4:30 से लेकर 8:30 तक होगा। कभी कभी थोड़ा आगे पीछे होता है, क्षमा कीजिए, क्योंकि दूसरा कुछ सेवा मिल जाते तो उसमें भी जाना पड़ता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। परमेश्वर गौर प्रभु की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णववृन्द की जय। हरे कृष्ण। पूर्णानंद जी प्रभु, तुम्हारा DHL में आ जाता है कल तक। शाबाश। अरे प्रभु, बहुत मेरा नुकसान हो रहा है 6 दिन तक, 6 तारीख तक लॉस। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जितना भी प्रसाद है रेफ्रिजरेशन करके रखेगा, आप ऐसे साथ में ले जाओ। अभी वो कल अपना आपका राइट हैंड आ रहा है ना? कल आ रहा है ना? पक्का? हाँ, विजयगढ़ आ रहा है ना कल? आज रात को निकला है उन्होंने बोला था 26 पक्का आने वाला है। आज मेरा बात हुआ आफ्टरनून में उससे। ठीक है, बात हुआ। ठीक है। हाँ, तो कल रात को बोला मैं बंदोबस्त करेगा मुश्किल से। ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शरणागता माता जी, बाकी कोई आता ही नहीं क्लास में, क्या हुआ? नहीं, कौन नहीं आता? शरणागता विवेक। अरे ये वासुदेव बोला मैं कभी कभी जाता हूँ, आया था ना 1-2 क्लास। नहीं, वासुदेव थोड़ा समय के लिए आया, निकल गया बात। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। कुछ सेवा है हमारे लिए बोलना इंडिया से। हाँ प्रभु, आज बोल देता हूँ। ठीक है। 6 तारीख को मेरा रिटर्न। ठीक है, पक्का। हरे कृष्ण। अभी वृंदावन में प्रभु, आई प्रे फॉर आनंद एवरीबॉडी। करो, हम लोगों के लिए भी प्रार्थना करिए। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, यस प्रभु, थैंक यू सो मच माय डियर। हरे कृष्ण।